दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि प्रताप चित्तौड़ के जब राजकुमार थे उस समय अकबर ने चित्तौड़ के ऊपर जो आक्रमण किया था और वहां पर जो करीब 8,000 राजपूत सैनिकों को मारा था और जो वहां की महिलाएं थी और 10 साल से कम उम्र के बच्चे थे उन लोगों ने जो जौहर किया था, जिसको साका और जौहर बोलते हैं, थर्ड साका और जौहर बोलते हैं, उसके बारे में हमने बताया था। आज हम आपको महाराणा प्रताप के राज तिलक के बारे में बताएंगे और किस तरीके से उन्होंने अपने मेवाड़ के जो राज पाठ है, जो उनका राज्य है, उसको उन्होंने कैसे कंसोलिडेट किया, उसके बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं कि महाराणा प्रताप को किस तरीके से राजगद्दी मिली और उन्होंने क्या क्या झेला। तो आपको मालूम है कि शायद हमने पहले अपने किसी एक एपिसोड में बताया था कि राणा उदय सिंह साहब जो हैं वो 50 साल की उम्र में स्वर्गवासी हो गए थे गोगुंडा में। और जब चित्तौड़ हारे थे उसके 4 साल के बाद की बात है। राणा उदय सिंह के 24 या 25 बच्चे थे, लड़के थे, और सारे के सारे राज्य घराने के ही थे। राज्य शाही का उनका खून था, ब्लड था। तो उन्होंने क्या किया था, जब 25 लड़के आप छोड़ जाएंगे तो एक फर्टाइल ग्राउंड आप छोड़ रहे हैं जिससे कि वहां पर सक्सेशन के लिए लड़ाई हो। और इस लड़ाई को शुरू करने में उदय सिंह खुद रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि उन्होंने जगमल को अपना सक्सेसर अपॉइंट किया था, जो धीर भाई और भाटी क्वीन का लड़का था। लेकिन उदय सिंह के इस ग्रास इनजस्टिस को डिस्कस करने के लिए वहां के जो सामंत है उन लोगों ने एक मीटिंग बुलाई। हुआ क्या था कि मेवाड़ में कोई बीच का मतलब कोई गैप नहीं होता है, इंटरजियम नहीं होता है। एक तरफ को लास्ट राइट हो रहा होता है और दूसरी तरफ को वहां का राज्याभिषेक भी हो रहा होता है। प्रताप को गोगुंडा में ही मेवाड़ का राजा बनाने का सोचा गया था, जबकि दूसरे जो राजकुमार थे वो राणा के फ्यूनरल में अंतिम क्रिया में व्यस्त थे। जगमल को अलग से एक सेरेमनी में राजा बनाया गया था। प्रताप के नाना जो सोमगारा के राजा थे और जालौर राव, उन्होंने जो मेवाड़ के किस्ताना का राजा था और चुंदावत का लीडर था, उनसे पूछा कि ये जगमल को जो राजा आपने बनाया है ये क्यों बनाया। उसमें लिखते हैं, मैं इसको पढ़ता हूँ, इसको पहले आपको शेयर कर देता हूँ, उसके बाद में पढ़ता हूँ, देखता हूँ। अरे वाह, आगे।
दादाजी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या हाल है? बस ठीक है सर, आशीर्वाद है आपका। चलो ठीक है, बैक स्टेज में बात करें। मैंने यहाँ तक पढ़ा है, प्रताप मैटरनल ग्रैंडफादर द सुंगारा किंग एंड जालोर राव बोथ कन्वर्टेड। और ये क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने पूछा, when a sick man has reached the last extreme and asks for milk, why refuse it? Why refuse it? क्यों मना करते हो? जी। Adding, but Sungara's nephew is my choice and I stand by Pratap. ये उनके नाना जी ने बोला था। अबे नाना जी कैसे हो गए भाई? या नाना जी का nephew क्यों बोल रहा है फिर? Anyway, कुछ भी उन्होंने ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ किया होगा। जी। दादा दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। थोड़ा आगे पढ़िए तो। हाँ, the nobles gathered and heated and concerned discussions ensued amongst them. Akshay Raj Songara is recorded to have said to Rawat Krishandas of Salumbar and Rawat Sangha of Devgarh that if Jagmal was to be the king, it had to happen with their consent. A quote unquote, on one hand, we have a formidable enemy like Akbar. Chittor is gone. Mewar is becoming barren. If the royal house sinks into infighting, then Mewar is sure to be ruined and enslaved. Muse the Samants. मतलब सामंत लोग ये बात बोल रहे हैं कि अकबर जो है इतना बड़ा दुश्मन है, अगर जी, आप जी, लोग जी. आपस में फाइटिंग करते रहोगे तो फिर मेवाड़ तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उजड़ जाएगा वो पूरा पूरा और इंस्लेव हो जाएगा, गुलाम बन जाएगा। जी जी. Both the nobles consented, with Songara asking for which fault should the eldest son Pratap, worthy and brave, be rejected. Yes. प्रताप को क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है? जी जी. Pratap did not. जी जी जी. Pratap did not want a blood bath in the family and was reconciled to his fate. He was saddling his horse Chetak to ride away to his solitude in some corner of Sindh when the Samants approached him and informed him of their decision to name him the king of Mewar. उस सिंध में कहीं पर चेतक के ऊपर सवारी करके अपना घूम फिर रहे थे वो। उनको तो मतलब ये मालूम नहीं था कि राजा बनाया जा रहा है। जब सामंतों ने मेवाड़ का राजा बनाने के बारे में उनको सूचना दी तो अब आ रहा है, Pratap was reluctant to dishonor his father's wish, but he saw the doom of Mewar if Jagmal was to remain the king. With a heavy heart, राजा रहेंगे, उनको समझ में आ गया कि अगर जगमल वहां पे राजा रहेंगे तो मेवाड़ जो है वो बिल्कुल मेवाड़ का तहस नहस हो जाएगा। With a heavy heart, Pratap consented. Rawat Krishna and Akshay Raj, along with Ram Shah Tanwar of Gwalior, took the arms of Jagmal and with minimal force removed him from the throne. उनको हटा दिया गया। Krishna remarked, "You have made a mistake, Maharaj. That place belongs to your brother." Then girding Pratap with a sword, thrice touching the ground, Krishna hailed him the next king of Mewar. अच्छा, ये फोटो में दिखा रहा है कि जगमल को कैसे उतारा जा रहा है गद्दी से। Then girding Pratap with a sword, thrice touching the ground. मतलब girding Pratap with a sword, गार्डिंग मतलब वो तलवार लगा दिया जाता है ना, गर्डल पे तलवार लटकाया जाता है ना राजा के लिए। Thrice touching the ground. sorry. Krishna held him the next king of Mewar. Thrice touching the ground मतलब नीचे जब राजा बन गया तो उसको तो मतलब उसके सामने तो झुकना ही पड़ेगा, तो 3 दफे वो झुके जमीन के ऊपर और फिर इनको डिक्लेयर कर दिया कि नेक्स्ट किंग ऑफ मेवाड़ है। Sorry. If there was any way Hindus can repay the debt of these unknown Samants of Mewar, सही बात है, बचा लिया इन लोगों ने मेवाड़ को, नहीं तो बवाल हो जाता। और
the greats who did the unthinkable at that time to defy the royal decree for the sake of motherland. Had these brave and intelligent Samans of Mewar been gripped with weakness or indifference that fateful day, we would have lost Pratap forever. Losing Pratap meant only one thing: slavery of Hindus. These divine souls saved Hinduism and our great nation by their foresight and courage that day. Pratap's strange ascendance to the throne also proves the deep democratic principles that have governed Hindu society for millennia. Although elsewhere in Bharat, the king is supposed to be a representative of Bhagwan Vishnu, but in Mewar, a Maharana is merely the custodian of the kingdom of Bhagwan Shiva, and Oh. thus he has no scope of deviating from the path of dharma, even if he is the king. Not yielding to cheap sentimentality or hollow loyalty to the throne, the Samans of Mewar stood firm against a myopic decision of their Maharana, and thus saved dharma and nation from total destruction. The second coronation of Pratap, with all the ceremonies, was done a few days later at Kumbhalgarh. Maharana Pratap Singh became the ruler of Mewar at the age of 32 in the midst of gravest existential crisis faced by the Sisodia clan and the people of Mewar. Pratap's ascendance to the throne is a strange mix of human weakness and strength in the most trying times. Uday Singh's traumatic childhood and precarious journey to kingship made him a weak, insecure, and indecisive person who perpetually dwelt on his victimhood and yielded to sycophants, thus leading to poor judgments in his life. Pratap, on the other hand, turned similar insults and the trauma of his childhood into his strengths and overcame all insecurities to rise as a towering figure in Mewar and a worthy leader of the great clan of the Sisodias. Pratap's turbulent life began with his childhood itself, but because of his iron will and a deeper understanding premised on spiritual guidance by his teachers, he did not sway from his goal of serving his motherland to his utmost capacity. To quote Colonel Todd, Pratap was often heard to exclaim, "Had Daji Rajsa Uday Singh never been or none intervened between him and Rana Sanga, no Turk or Turk could ever have given laws to Rajasthan." Todd Had writes, Daji Rasa never been, comma, or none intervened between him and Rana Sanga. अच्छा, किसी ने अच्छा किसी ने इंटरवीन ये किया था गड़बड़ के चलते जी 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 ये गड़बड़ के चलते मतलब तुर्क लोग राजस्थान घुसे थे. Todd writes, stressing the rise of Sangha, Hindu society had assumed a new form in the century preceding. The wrecks of dominion from Ganga and Yamuna have been silently growing into importance. Amer and Marwar had gained such power that the latter single-handedly coped with the mighty imperialist Sher Shah. A prince of commanding genius alone wanted to snatch the scepter of dominion from the Islamists. They found in Sangha such a leader who possessed every quality that exhorts spontaneous obedience and the superiority of whose birth, as well as dignity, were admitted without cavil by Hindus. These states had powerful motives to obey such a leader in the absence of whom the ancient patrimony was lost, and such they would have found in Sangha's grandson Pratap, had Uday Singh not existed, or had a less gifted sovereign than Akbar been his contemporary. Oh, okay. Fate had presented अगर Pratap. मतलब कहने ये चाह रहा कि अवधेश सिंह अगर राजा नहीं बनते थे हाँ 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 तो वो प्रताप तो आते ही नहीं थे फिर वहां पर गद्दी बिल्कुल में. बिल्कुल That's what बिल्कुल I want to say. Okay. हाँ हाँ यही बोलना चाह. Hmm. Fate had presented Pratap with the most difficult predicament
any Hindu king could face at his time. The interim between Pratap and Sanga was marked by massive infighting in the Mewar household, with weak and ineffective kings like Ratan Singh II, Vikramaditya, the usurper Banbir, and Uday Singh ruling Mewar in quick successions, causing the economic and military decay of Mewar. Pratap had the task of not only unifying his own clan and Samans, but take on one of the mightiest invaders of that time, Akbar. That Pratap achieved both these objectives successfully demonstrates the foresight, large-heartedness, and vision of Pratap, the true heir of the glorious Mewar. After his humiliation, Jagmal left Mewar for Delhi and prostrated to the arch-enemy of the house, Akbar, proving the decision of Mewar Samans to be right. अच्छा ये चला गया था Jagmal. Jagmal was a petty prince who aspired for a position of power he did not deserve in the first place. दादा, अब यहाँ पर मुझे बोलना पड़ता है with a heavy heart of being attacked कि ये खून का चक्कर होता है भाई. जी जी जी. जगमल का खून क्या था? वो तो कहीं वो ऐसे कोई थी ना, वो जिसको ज्यादा चाहते जी थे. जी जी हाँ समझ गया मैं. जी जी. Hindus will forever be indebted to the foresight of Mewar's chieftains who saw this and defied the wish of their king to replace him with Pratap. Jagmal was granted the Jagir of Jahajpur in Bhilwara by Akbar. He was married to the daughter of Sirohi's king Man Singh, who died without an heir in 1571. Jagmal approached Akbar to help him annex Sirohi from Sultan, the royal nominee of Sirohi. Akbar sent two of his generals and the royal army to assist Jagmal in annexing Sirohi. On 17th of October 1583, Jagmal attacked Abu, where Sultan was fortified, and one of the most ferocious battles of Rajasthan was fought. Here, the invading army of Akbar was crushingly defeated by a relatively smaller army. The two Rajput generals, Raya Singh and Koli Singh, along with Jagmal, were killed by Sultan, making Sultan the undisputed king of Sirohi. Thus was destroyed a threat to Pratap and Mewar, which could otherwise have complicated Pratap's resistance to Islamic imperialist aggressors. Pratap became on 17th October 1583 जगमल अटैक्ड अबू. अच्छा, इसको अकबर से मदद मिल रही थी ना, इसके लिए इसने वो किया. जी जी जी. ओके 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 ओके. और वहां पर ये मारा गया, जगमल मारा गया. ओके ठीक. Pratap became king of Mewar. Pratap became king of Mewar and succeeded to the titles and renown of an illustrious house, but also to a kingdom without capital, a clan without resources, Samants dispirited by reverses, and subjects demoralized by losses. Yet equipped with the noble spirit of his race and a steely resolve to overcome the immense challenge ahead of him, Pratap contemplated the recovery of Chittor and the vindication of the pride of Rajputs. Akbar, though unstable in Delhi, was gaining strength and allies rapidly. The houses of Amer, Bikaner, and Bundi forged alliances with Akbar, and thus Pratap had to reconcile with the fact that he was going to fight not only the Turks, but also his own brothers in faith and blood. This fact would weigh very heavily on the mind of Pratap in the subsequent war he had to fight with the Turks. One of his brothers, Sagar, also deserted him and allied with the Turks. The scars of the third Saka of Chittor had ravaged the consciousness of Mewar, and its entire population was dejected and demoralized. Pratap inherited a wounded Mewar, but was also nobly supported by his old friends like the sons of Jamal Rathod and Patta Chudavat. The houses of Salombara, Devgad, Amer, etc., declared their total loyalty to Pratap. The erstwhile chief of Gwalior
Ram Shah Tanwar became his main army general, and the chief of Delwara became the king's right hand. Bhama Shah, the Oswaldian cashier of the royal house, was an even fiercer and greater warrior than he was a finance manager. Bhama Shah and his brave brother Tarachand swore loyalty to Pratap and were instrumental in funding and strategy for the two epoch-making wars of Mewar against the Turks, namely Haldi Ghati and Devair. अच्छा, ये मारवाड़ी थे हैं? जी जी। अच्छा। Ban Mata Mandir. A special mention of Shakti Singh is required, the estranged brother who played a critical role in Pratap's life and which has been detailed elsewhere in this book. Shakti Singh's sons came to be known as Shaktavats and went on to become fierce loyalists and warriors for Pratap and Mewar. From the time of his ascendance to the throne in 1572 until the year of his moksha in 1597, Pratap was king for 25 years and he single-handedly withstood the might of the Mughals and ultimately defeated it. Some of his own people deserted him for greener pastures, but Pratap stood his ground alone in this wilderness, fighting wars, killing his enemies ruthlessly, losing friends and allies to death and deceit, flying from one rock to another, carrying out destruction from the plains to guerrilla warfare in the mountain passes, feeding his family and army with the fruits of the native hills, and rearing the nursling hero Amar Singh amidst savage beasts and savage men. Pratap energized his people and army with his amazing leadership and resolve to continue fighting the Turk imperialists. The magnitude of the perils he faced only affirmed his fortitude with the vow to make his mother's milk resplendent. वो The mere idea that the son of Bappa Rawal would bow to a mortal was unsustainable. It is to the immense credit of the Samants and the general population of Mewar who stood by their king through unimaginable suffering, death, and जब poverty. Mewar had witnessed the destruction caused by Akbar at Chittor on 25th of February 1568 at the Third Saka, and yet it rose to defend her freedom and honor from the ashes of Jawar at Chittor. Mewar rose to become the beacon of Hindu hope in the region solely because of one man, Maharana Pratap Singh, the greatest Hindu warrior king of all times. One man who altered the entire saga of attempted Islamic subjugation of the Indian subcontinent by his insurmountable grit and determination. One man who was not a reckless, self-serving, indulgent monarch sucking the blood and money of his people, but a Mahayogi who donned the mantle of a warrior to free the motherland and banish the dark clouds of slavery that loomed on the Hindus of the region. One man who gave up all comforts and riches that a Maharana could have enjoyed. Refusing to compromise with the Turk imperialist, he chose instead a life of hardship because honor was dearer to him than a few years of a wretched life. A true leader who respected the counsel of his wise and loyal Samants, as well as groomed the youth to lead the future of Mewar. A true Spartan who chose to sleep with his spear as his pillow than to rest his head on velvet that night. The following were the four vows that Pratap took upon becoming the king of Mewar. They became a part of the folklore of Mewar and stirred the most insignificant and remote subject of Mewar to take on the Mughal marauder. 1. All articles of luxury and pomp were to be abandoned until Chittor was reclaimed. Second, the gold and silver dishes were laid aside for pattals of plates and utensils made out of leaves. Third, the beds of cloth and soft velvet were replaced with straw and leaves. Fourth, the martial nagadas, drums,
which used to lead royal processions, were placed at the rear to mark and remember the fallen fortunes of Mewar and stimulate its recovery. What a sacrifice. नहीं तो to make one person strong, he has to undergo these, he has to give up these luxuries. और इसीलिए वो बोले थे कि जब तक मेवाड़ चित्तौड़ रिक्लेम नहीं होगा हम लोग इसी तरह रहेंगे. दादा एक बात मेरे को ध्यान आ रही है इस बारे में. Yes, once you are born in royal family and you Yes. are being groomed in that atmosphere, then do you think complacency also sets in? Too much of, I mean, क्या बोलूं मैं, luxury and pomp often results in. मेरा कहने का मतलब यही है, had Pratap not faced all the problems during his childhood, he was not allowed to enter the Raj Mahal. He and his mother was allowed to stay outside the Raj Mahal, and they were sending the food and everything there. और ये वहां पर उनके बच्चों के साथ में, भील लोगों के साथ में, ट्राइबल लोगों के साथ में खेलते थे, उनके साथ में रहते थे. तो Pratap was not having that luxurious upbringing sort of life, like ऐसा कुछ है. Had he been reared or grown up in the Raj Mahal palaces, तो शायद ऐसा नहीं होता था. मैं ये सोच रहा हूँ, ऐसा हो सकता था. हो तो सकता था. 2-3 केस ऐसा भी है कि राजमहल के लोग भी सन्यासी बनकर निकल गए, ऐसा भी केस है. नहीं, अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें, मैंने तो मतलब अभी तक नहीं, जो प्रताप का मैं इनका नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ दूसरे. इसमें पीछे जाता हूँ. वो जैसे रतन सिंह है, जब वो उसने अपना खिलजी ने जब अटैक किया था, तो दैट टाइम ही वाज आल्सो बस बिजी था. दारू पियो आराम से और राजमहल में बैठ करके वहां पर डांस करो, देखो, यही तो करता है. ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन देयर आर एक्सेप्शंस आल्सो. और इनका ठीक है, आप सही कहे हैं, इनका अपब्रिंगिंग जो था वाज डिफिकल्ट, सो ही कुड कनेक्ट मोर इजीली विद द तो वैसे उदय सिंह का भी तो है ना. उदय सिंह क्या प्रिवेलिंग जरूरत है सिचुएशन, 25 लड़के पैदा करने की, 4-4 5-5 रानियां रख करके दुनिया भर का तमाशा करके बैठ गया. तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बप्पा रावल है. बप्पा रावल हैड कम आउट ऑफ द सेम इवेंट्स जैसे कि ये आए थे, तो बप्पा रावल के अंदर फाइटिंग स्पिरिट था. तो वही देखें सर, राणा सांगा और राणा प्रताप के बीच में जो है, ये पूरा इनका खानदान जो खत्म ही हो रहा था ऑलमोस्ट. ये सब आपस में लड़कर, ये सब अयाशी, ये सब करके ये नहीं आते. तो आज हम जो पढ़ रहे हैं आज कि हिंदुइज्म को कैसे बचाया गया, उस स्थिति पे हम लोग नहीं आते थे. So what I feel is that जो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप ज्यादा अय्यास होंगे और आप ज्यादा मतलब दारू पी के मस्त रहेंगे, तो जो वहाँ के जो इन्फॉर्मर है वो भी तो अकबर को या खिलजी को सबको बताते होंगे ना कि अरे वो तो मस्त रहता है, कोई मतलब नहीं है. बिल्कुल बताएंगे. ऐसा भी तो बोलते हैं ना. नहीं, हुआ ही होगा ऐसा, लोग बताते ही थे, जरूर बताते हैं. Ascendance to the throne, initial fortification. Pratap commenced the duties of governing and generating revenues immediately. देखिए कितना foresightedness था. New grants were issued to the nobles with regulations defining the services required. Kumbhalgarh was declared the capital and strengthened. Similarly, Gogunda and other mountain fortresses were strengthened and fortified. Unable to keep the plains, Pratap reverted to the ancient system of his ancestors, commanding his subjects to retreat to the mountains. Pratap prepared himself for the impending protracted war with the Turk imperialists, मतलब अकबर के बारे में बोल रहा है, with meticulous implementation and unrelenting severity to enforce the compliance of his edicts. The fertile area between Banas and Beris was to be evacuated and left Bechirag without a lamp. Banas and Beris are river, huh? To be evacuated and left Bechirag, that is without a lamp.
The idea was to burden the Mughals with carrying the supplies whenever they were to attack Mewar. There would be no local supply of any kind, and no slaughter of ordinary citizens, which was the practice of the Turks at that time. Pratap would personally enforce strict rules on the people of Mewar. The idea was to burden the Mughals by carrying their supplies whenever they were to attack Mewar. अच्छा, मतलब that area was जी सर. totally evacuated so that वहां पर कोई दिया भी न हाँ जलाए हाँ हाँ. जाए. तो इनको अच्छा. तकलीफ होगी ना फिर आने में. There would be no local supply of any kind and no slaughter of ordinary citizen. No slaughter of ordinary citizen means what? नहीं नहीं, Who? अंधेरे में तो दिक्कत होगी ना, उतना समझ हाँ में हाँ नहीं हाँ आएगा. हाँ, अच्छा अच्छा. Which was विच the वॉज द practice of the प्रैक्टिस Mughals. प्रैक्टिस ऑफ द टर्क्स. मतलब चिराग या दिया देखने से तो फिर लोग समझ जाएंगे सेटलमेंट है यहाँ नजदीक. ये लोग छिप हाँ. कर रहते थे ना. बेचिराग अच्छा. इसलिए रखा गया कि समझ में ना आया कि आदमी है या नहीं है, कोई बस्ती है नहीं है. Once accompanied by a few horsemen, Pratap set out to Yes. invigilate. नमस्कार जी. हाँ दादा, प्रणाम दोनों को. वो जी प्रणाम आजकल के प्रणाम. मॉडर्न वॉरफेयर में जब एयर स्ट्राइक्स होती हैं तो ब्लैकआउट्स कर हाँ देते हाँ हैं ना, हाँ. पता ना चले बिल्ट अप एरिया. तो वही स्ट्रेटजी है. ठीक है. जी 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 Blackout. बिल्कुल. हम्म. हाँ हिरणमय जी भाई नमस्कार. Once accompanied by a few horsemen, Pratap set out to invigilate the obeisance of his commands. The silence of the deserts prevailed in the once green pastures of Mewar. Jungle grass replaced the fields of corn. The highways were choked with thorny babool, beasts of prey. ओह, क्या बात है. अच्छा. मतलब जितना कठिन बन जाए जगह तो अच्छा उनके लिए ठीक है ना. The उनका highways were मकसद choked with thorny babool, beast of prey, हाँ, inhabited the deserted. the अच्छा. deserted villages. In the midst of this wilderness, a lone shepherd took out his flock to the remnants of vegetation in the once luxurious meadows of Umtala on the banks of river Banas. After a brief enquiry, the shepherd was put to death, and his corpse hung high on a tree to send a message across to the violators of Pratap's plan of fighting the Turks. To quote Todd, by such patriotic severity, Pratap rendered the garden of Rajasthan of no value to the conqueror, and the commerce established between the Mughal courts and Europe, conveyed through Mewar from Surat and other ports, was intercepted and plundered. अच्छा. They were trading through सूरत. हाँ, सूरत का जो पोर्ट था वहां से ये जी, लोग. जी. अच्छा अच्छा. We can We only can. imagine the resolve and determination of the people of Mewar who rallied behind Pratap in following his plans to make life hell for the invading Turk forces. All farming communities moved out of Mewar between 1572 and 1583 when Mewar was won again. Ordinary citizens relocated into the hills of Aravallis, and thus thousands of new villages came into existence. This also resulted in close contact between the people of Mewar and the mountain-dwelling Bhils. The Bhils welcomed them with open arms, fed an entire population on fruits, and protected them by accommodating them in the safety of the jungles. भील लोगों के साथ फोटो. The Bhils were instrumental in this movement of population from plains to the hills, and this community has had the distinction of adorning the royal insignia of Mewar for centuries now. Bhils were also the mainstay of the armed resistance by Mewar, as will be detailed in the subsequent chapters. Inspired by Pratap, the Samants and the chieftains became liberal with regard to tax collection from their impoverished subjects. The love and trust the people of Mewar showered on Pratap is unparalleled in the history of mankind. Armies fight wars, and soldiers die and kill for honor and riches, but never had an entire population fortified itself against a foreign invader, as it happened in Mewar under Pratap. If any other king were to pass such edicts,
Mewar would have been littered with traitors and revolts, making it ungovernable. Yet Pratap was extraordinary in leading by example in forbearance and fortitude, anticipating the hardships and preparing his people. He thus proved himself to be an able leader, an excellent war strategist, a compassionate king, and a far-sighted and intelligent ruler. The love shared by the people of Mewar on Pratap is unparalleled. Not only did he plan the campaign against the Turk aggressor, but very effectively communicated it to the last of his subjects. The wars of Haldi Ghati in 1576, the 7 years of interim, and the final victory at Devair were to prove the effectiveness of Pratap's genius in pushing the Turk invader away for as long as he lived. Pratap learned from his grandfather Sanga's mistakes of exposing themselves to Mughal firepower and chose guerrilla warfare to inflict damage on the Turks. He learned from the third Saka that the enemy was a ruthless marauder who would pitch Rajputs against Rajputs and mercilessly slaughter Hindus. दादा प्रताप जी जी एक मिनट दादा जय भारती सर जी सर आप लोगों ने हल्दी घाटी का तो लाई के बारे में पढ़ा होगा, ये देवेर के बारे में जी, पढ़ा जी। है किसी ने? जी ये जी हिस्ट्री से गायब है। मैंने तो नहीं पढ़ा हिस्ट्री में ये इसके बारे में, देवेर के बारे में। मैं देवर जगह के बारे में नहीं पढ़ा हूँ। आप हल्दी सही घाटी बोल में रहे हैं। बोलते हैं महाराणा प्रताप हार गए, उसके बाद में फिर आगे चले जाते हैं, फिर बताते ही नहीं है लोग कुछ हुआ कि नहीं हुआ। नहीं सर, मैं कुछ ऐड कर दूं। ये जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो ड्रॉ हुआ था, कोई जीता नहीं था। वो तो है, वो लेकिन ये लोग बोल रहे हार गए थे ना, जो नहीं हाँ, वो झूठ बोल रहे हैं। ये मार्क्सिस्ट जो एजुकेशन मतलब एजुकेशन पे कब्जा करके बैठे हैं, वो झूठ बोलते हैं कि हार गए थे। अगर हार गए थे होते तो प्रताप मारे जाते। प्रताप उनकी वाइफ और उनके घर के जितने भी महिलाएं थे, सबको मार दिए जाते, सॉरी रेप किए जाते, और पुरुषों को मार दिया जाता। ऐसा नहीं हुआ है। तो वो मुगल्स अपना ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पाए, तो वो मैच ड्रॉ हुआ। आगे पढ़ो। Pratap saw how fellow Hindu kings like Bhagwan Das of Amer stood as meek witnesses to the slaughter of Hindus at Chittor, and he knew he would have to fight a solitary fight to retain Mewar's freedom and honor. Pratap understood the vile and hideous nature of the Islamic imperialists and knew two facts. One, that coexistence with these immoral barbarians was impossible, and secondly, war was an inevitability. Hence, he devised a long term campaign to defeat Akbar and weed him out of Mewar permanently. दादा, He struck alliances. दादा, जी, जी, viewers, जी, जी, जी. please note this sentence. Coexistence with these immoral barbarians was Immoral barbarians. Today also it is impossible. ये है, today also it is impossible. He struck alliances, subjugated rebellions, purchased the loyalty of fence-sitters, created a socially cohesive alliance of all communities in Mewar, and implemented the campaign with clinical precision. The Hindus haven't truly understood and recognized the military genius and supreme sacrifice of Maharana Pratap Singh. When the leftist jihadi historians could not erase the life and deeds of Pratap, they concocted and spread the lies of Pratap being a mindless rebel with little understanding of military strategy. Pratap was shown to be an impractical hothead who rose against Akbar without realizing his strengths and weaknesses objectively. The scale of lies is so humongous, yet spurious, that they fall apart even on a cursory examination of facts. If Muslims were to retreat, it was a tactical move. If a Hindu king retreated, he was an escapist. If Muslims lost a battle, it was a mere setback. If Hindus lost a battle, it was final. If Muslims fight guerrilla warfare, it was a masterstroke. If Hindus fight it, it was a compulsion. If Muslims raped Hindu women, it was their religious duty. If Hindus returned Muslim women unmolested, silence. If Muslims offered treaty, it was strategic wisdom.
If Hindus did the same, it was capitulation. If Muslims slaughtered innocents, the pretext was religion. If Hindus slaughtered non-combatants, it was murder. If a Muslim wins a war, he's a Ghazi. If a Hindu wins a war, it's a stroke of luck. The direct consequence of these lies is that the whole saga of the glorious Hindu resistance to Islamic invasions has been completely derailed. While the intelligentsia of the Hindu society and the entire globe should have been examining what Islamic invaders brought to the table, the entire focus was shifted to the lies woven around the stiff Hindu resistance to Islam. Instead of the global community being grateful to Hindus for halting the march of a dark force that offered nothing to human civilization except blind faith, false theories were floated and perpetuated endlessly. All this was done so that Islam as a thought, as a way of life, escapes scrutiny, while the world is engaged in the noise and glitter around the Hindu resistance to Islam. Thus, the acidic damage being caused by Islamic invasions to Bharat were glossed over in these lies. Writer-historian Ivan Austin writes in his book, Mewar, the world's longest-serving dynasty, that if Bappa, Human, and Pratap had not stopped the tide of Islam, the entire world would have been Islamized. Wow, Call- golden word, really. Oof, oof. ये ये तो किताब से कोट हमारे किया गया। बच्चे सबको पढ़ाना चाहिए. If Bappa, Human, and Pratap were not there, we all would have been converted. To call Pratap an escapist is akin to calling a lion escaping from a jackal. Death was no deterrence to a man like Pratap, who faced it frontally numerous times in his life. Pratap fought every war with the wise counsel of Mewar's war council and his trusted lieutenants. To run away from war was unknown to him. Of course, if one is surrounded by enemies on all sides, what is the point of dying needlessly? Pratap used the geographical advantage of Mewar to the hilt and defeated Mughals comprehensively. He treated friends with respect and kindness and enemies with merciless slaughter. Pratap single-handedly shaped the contours of the Hindu-Muslim conflict with unparalleled ferocity towards Islamic imperialists and established Dharma so effectively into the psyche of a dying Hindu society that dozens of kingdoms rose against the Mughals. Within 3 generations of Akbar, the Mughals were finished, while Mewar in all its glory stands even today, not as a relic of its turbulent past, but as a glorious reminder of its power, sacrifice, and fortitude. Pratap carried the highest principles of morality and honorable conduct on his lone chest all his life. Pratap passed on to us a legacy worth living for, worth fighting for, worth dying for. We are indeed the luckiest people on this globe to be the heirs of such sublime legacy. Yes. Okay. Pratap and Akbar, 2 worldviews. The defining feature of Maharana Pratap's life and work has been his incessant struggle against the Turk Mughal invader Akbar. तर्क मुगल ये अकबर टर्किश था नहीं, उज्बेकिस्तान ना, उज्बेकिस्तान नहीं लोग. अच्छा, वो उज्बेकिस्तान में तुर्क लोग थे. अच्छा, तुर्क लोग ही थे वो. It was a royal family feud of a very unique kind. Babur had fought Pratap's grandfather, Rana Sanga, and Babur's grandson Akbar and Pratap continued the tradition of their families. In the interim, मंगोल टाइप था ये. मंगोलिया से इन लोग आया था ना, तो फीचर्स तो थोड़ा सा रहेगा ही उस तरह. फीचर्स वही है. अगर आप उज्बेकिस्तान में जाओ जहाँ पर ये बाबर और ये चिंगिस खान वगैरह सब के वो बने हुए हैं, फीचर्स तो वही ओरिएंटल है ना, छोटी छोटी आंखें हैं, नाक वो है, तो दैट्स ऑल दे वर. शादियां तो इनकी पहली बीवियों से जो करके है वहीं से लेके आए ना ये. जी जी जी. तो जी जी.
In the interim, both the families were led by weak kings, Humayun and Uday Singh, both of whom did not leave much impact on history except raising their sons, both of whom altered the history of the land of the Hindus permanently in their own ways. Mewar was recovering from Rana Sanga's murder and Uday Singh's turbulent rise to the throne in Mewar. Pratap witnessed all this as a child and a young man. Uday Singh was a relatively weak ruler of an aloof nature and an indecisive mind. Akbar inherited a turbulent Delhi from his father Humayun, and most of the affairs of the state were managed by his caretaker Bahram Khan. Yeah. In Okay. 1556, the Second Battle of Panipat was won by Akbar, who defeated the Hindu king Hemu Vikramaditya. With that defeat of Hemu, Hindu opposition to Akbar considerably weakened, but Akbar and Bahram Khan got a taste of Hindu fury at Panipat, where Akbar won the war merely by an act of deceit and luck. On 15th of November 1556, when Hemu's huge army descended upon an army of Akbar 5 times smaller in size, it was thought that it was just a matter of time before Hindus would crush the Turks. But the old tactic of Islamic invaders to deploy a team of the best archers to identify and go for the Hindu king worked once again. It was as though Hindus refused to learn anything from history and were hell-bent on repeating the same mistakes. Chivalry has little place when confronted with a deceitful enemy, a reality that Hindu kings refuse to learn. At Khanwa, Akbar's grandfather Babur had similarly injured Sanga by employing a team of archers hitting him. The same tactic was repeated at Panipat by Akbar, where Hemu was hit and mortally wounded by the Mughal archers. The Hindu kings repeated the same mistake of leading from the front, while Islamic sultans and badshahs always kept themselves concealed at the rear. After Hemu had been beheaded, his old father was asked to convert to Islam, and he too was beheaded when he refused to do so. Akbar understood that Hindus could not be subjugated and converted by force. He therefore put up the mask of tolerance. थोड़ा सा note कीजिएगा सर. He therefore put up the mask of tolerance and started employing Hindu ministers. This portrayal of softness worked to his advantage, and Hindu kings softened to Akbar's ambitions. Akbar looked back at the last 350 years of incessant conflict and understood that the only way for Islamic rule to find roots on the Hindu soil was by aligning with the Rajputs. It is worth noting that between the 12th and the 16th century, for almost 350 years since the Second Battle of Tarain, which took place in 1192, when Ghori defeated Prithviraj Chauhan of Delhi, no Islamic ruler could establish himself in Delhi. This was partly due to the rabid zeal for jihad, to plunder and force conversion, which was resisted with a do-or-die attitude by Hindu kings. It was also partly due to extensive infighting among the invaders, who were largely looters and not from a civilizational ruling class. Until 1556 Christian era, the so-called Hindu Sultanate was nothing but an unending saga of assassinations, dethronements, treachery, and barbaric lust for power. No work of consequence was ever erected by these so-called sultans, as all their lives were spent in quelling internal rebellions and fighting local rulers. With Akbar's rise, Hindus faced a new kind of enemy who cunningly changed tactics and would pitch Hindus against Hindus, using the internal rivalry and the insatiable greed of some Hindu monarchs for power to his advantage. As Akbar was intensely engaged in expanding his kingdom, he focused all his energies on Rajasthan, as he knew that Rajputs in general, and especially the Sisodias of Chittor, would be difficult to contain or subdue. Akbar therefore befriended the Kachawas of Amer, Jaipur, and extended his hand for matrimonial relationship. Babur had made similar offers to Amer's Rajputs, but had been rebuffed by Jaipur's Rajputs. A lot has been written about the alignment of Amer Rajputs to Akbar,
and especially the marriage of Harkubai, erroneously known as Jodha, the daughter of Raja Viewers, please Bharmal of note, Amer. she was not Jodha, she was Harkubai. जी, Hmm. erroneously known as Jodha, the daughter of Raja Bharmal of Amer with Akbar. Let us try to do a dispassionate assessment of the circumstances in which the Amer Rajputs decided to align with Akbar. First, Jaipur as a state is largely made up of plains, unlike Mewar, which is protected by the Aravallis all round. If Amer Jaipur had decided to fight with a strong Akbar, there would not have been a match for the religious zeal of the Turks and the massive firepower they wielded in the plains of northern Rajasthan. Fighting a guerrilla war was not even an option for Jaipur. Second, there was no Rajput confederation or a leader of any stature to unite the Rajput kings of Rajasthan after Sangha had been poisoned and killed by Baba. Mewar, the beacon of Hindu resistance, was in disarray, and each royal house was left to fend for itself. Jaipur alone was incapable of leading a fight against a powerful Akbar, especially after the defeat of Raja Hemchandra Vikramaditya. Third, inter-house rivalry also played a role in those times. The house of Jaipur was always subservient to Mewar for centuries, although there is no documentation of Mewar's princedoms belittling fellow Rajputs, but off and on some skirmishes would take place. It cannot be ruled out that Bharmal, his son Bhagwan Das, and his son Man Singh nursed some grudges against the house of Mewar. Fourth, poet Shamal Das records in his exhaustive book Veer Vinod that when Mughals offered matrimonial bonds to them, the chiefs and the priests of Amer decided that to implement peace, Jaipur must give its daughters, but to accept Mughal daughters would eventually lead to Islamization of the Jaipur royal house. Thus, accepting Mughal women into the Raj. मैंने परसों मैंने प्रदीप से पूछा था कि अगर कोई मुस्लिम लड़की आएगी तो ले लोगे? प्रदीप ने क्या जवाब दिया था? ले लेंगे। यहाँ क्या बोल रहे हैं? But to accept Mughal daughters would eventually lead to Islamization of the Jaipur royal family. मैंने यही बोला था कि तो बचपन से तो वो उस माहौल में जो है तो तुम्हारे घर पे वो नमाज पढ़ना शुरू कर देगी और रोजा रखवाना शुरू कर देगी वो। यही बात मैंने अफगढ़ सिंह को हाँ कह रहा था ना, ट्रेन में एक लड़का मुस्लिम लड़की को लेके आ रहा था, बचाया। मैंने कहा उस लड़के बिल्कुल सर, तुम अपने खून में उस खून को मिलाना चाहते हो जो खून तुम्हारे खून का प्यासा है। मैंने ये बोला था अफगढ़ सिंह को। एकदम सही बात बोले हैं, एकदम सही बात। लेकिन अब वो यंग बच्चे हैं, वो चलो करो फिर। नहीं, वो बदल जाएंगे फिर ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम दे विल आल्सो रिफॉर्म। थोड़ा धक्के खाएंगे तब तो संभलेंगे ना। एक फैमिली तो बर्बाद हो जाएगी ना दादा। एक आध फैमिली बर्बाद होगी तब तो लोग सीखेंगे। This was a very wise move that prevented conversions within the Jaipur. जानबूझ करके हिस्ट्री में ये लिखाया नहीं गया। अगर ये लिख देते ना हिस्टोरियन हमारे, तो काफी बच्चे जो है जब स्कूल में होते तभी समझ जाते कि इनके साथ इनकी लड़कियों के साथ शादी नहीं करनी। सर पाकिस्तान का हिस्ट्री। हाँ जी सर। तो सर बोलिए। आज के मॉडर्न टाइम में आप देख लो ना, सुनील दत्त ने किससे शादी की और उसका लड़का क्या निकला। ये मैंने बोला था पिछले हफ्ते भी। बिल्कुल। चाहे सलमान खान की माँ हिंदू है, वो फिर भी मुस्लिम है। अगर हिंदू ने शादी मुस्लिम से की, 99% चांस है कि वो लड़का मुस्लिम बनेगा, जो चाहे नाम उसका हिंदू है। संजय दत्त चाहे वाइस वर्सा भी हो, चाहे हस्बैंड या वाइफ पे कोई सा भी हो, ये लोग वही करते हैं। हाँ। लेकिन अगर हिंदू लड़का शादी करेगा तो उसको कन्वर्ट ही कर देंगे ना, उसको तो मुसलमान बना ही देंगे, उसको कोई मतलब नहीं उठता अगर जिंदा रहना है उसको। तो नहीं तो ढूंढ के मारेंगे उसको, बोलेंगे जैसे वो कहाँ हैदराबाद में कहाँ पे हो रहा था ना कि भाई ने और सबने मिलकर के मार दिया। वो आंध्रा में तो था शायद, वो किसी को बिल्कुल सड़क में मारा था, किसी मुस्लिम लड़की के साथ में वो भाग रहा था। ये तो सर आप अभी का बता रहे हैं, ये तो बहुत दिन से चल रहा है। हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ है ना, जिन हिंदुओं ने मुसलमान से शादी की कोई लड़की से, तो कन्वर्ट करना पड़ा उनको।
आगे पढ़ो. Thus accepting Mughal women into the Rajput clan was politely declined. This was a very wise move that prevented conversions within the Jaipur royalty, as giving a daughter, albeit with a heavy heart, was easier than bringing a Muslim daughter into the royal house, as it would result in a dilution of Hindu dharma and customs in Jaipur's Rajputs and their progeny and possible Islamization. Please comment on this. क्या पैरा है? Oh. This was a very wise move that prevented conversions within the Jaipur royalty. Then bringing a Muslim daughter into the royal house, as it would result in a dilution of Hindu dharma and customs in Jaipur Rajputs and their progeny and possible Islamization. बच्चा पैदा होगा तो बोलेगा मम्मी को बोलेगी ठीक है हम तो मुसलमान थे तो भी बन जा बच्चे. क्या करना है? कान में फूंक के वही तो पढ़ना है. क्या पढ़ना? आयत पढ़नी होती है. क्या होती है? जो मोहम्मद साहब सब कुछ है, अल्लाह सब कुछ है, वही तो बोलता है. वो लोग बना दिया, बस कन्वर्ट कर दिया और काट दिया नीचे वाला. फोरसाइट थी दादा. अब तो हिंदू को क्या फर्क पड़ता है? आज के हिंदू को चलो कोई बात नहीं, वो उधर नमाज पढ़ लेगी, हम इधर दिवाली मना लेंगे. Fifth is financial reasons. In 16 CE, even the mighty Mewar under Amar Singh had to sign instead of a barter a peace treaty with Jahangir after Pratap's moksha, passing into immortality. As Mewar faced a financial crunch and inability to pay salaries to his army, the fear of impending revolt loomed large. As such, Amar Singh sent his son Karan Singh as an emissary to Jahangir's court and bought interim peace with the Mughals. If this fate befell the mighty house of Mewar, Jaipur would possibly have similar reasons for their treaty with Akbar given the times. Sixth, and very importantly, Jaipur had always been a very strong ally of the Mewar house and their fight against Islamic invaders. In the 1000-year war for Dharma, Jaipur left Mewar side only, and about 100 years between 1562 and 1670 to align with Akbar, Jahangir and Shah Jahan. We should not forget that Prithviraj Kachawa was Sanga's trusted friend and allied with him against Baba at Khanwa. Kachawa warriors aligning with Raj Singh against Aurangzeb is also a well-documented historical fact. Seventh, Jaipur's Rajputs formed a sizable army of Mughals, implied that there would be no plunder and slaughter of the local Hindu population. This is why, during the reign of Akbar, Jahangir and Shah Jahan... Very important. Yes. This is why during the reign of Akbar, Jahangir and Shah Jahan, we see no mass-scale destruction of Hindu temples and क्योंकि वो करेंगे नहीं ना, तोड़ेंगे नहीं ना, वो जो हिंदू फौजी होंगे उनके. अच्छा. When Aurangzeb began destroying Hindu temples and forcibly converting Hindus, the Jaipur Rajput rebelled and many of them aligned with Mewar and Marwar, deserting their Mughal post. Achha. It is due to this rebellion that Mughal ruled crumbled as soon as... Achha. Okay. As soon as Aurangzeb died in Christian era 1707. 8th, innumerable Hindu temples were built by Jaipur's kings in Mathura, Vrindavan, and Kashi. The Jaipur royal house provided patronage to most Hindu schools of thought, where Vedic learnings were kept alive. Man Singh was instrumental in protecting and patronizing Goswami Tulsidas, who penned the epic Ramcharitmanas during that time. काशी विश्वनाथ टेम्पल ये उन लोगों को जवाब देना चाहिए कि अकबर के टाइम में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था. मतलब अकबर वाज सो बेनेवोलेंट कि वो उसने अलाउ किया. एक्चुअली इट वाज बिकॉज ऑफ मान सिंह. ये हिस्ट्री में नहीं हो, वहां पे बोल देते हैं नहीं अकबर ने ये कर दिया वो कर दिया, अकबर वाज सो टॉलरेंट, उसके टाइम में तो सूरदास ने भी ये कर दिया वो कर दिया. बट नहीं, ये मान सिंह की वजह से रामचरितमानस लिखा गया था. जयपुर के राजा जो थे मान सिंह, जिनको बोलते हैं साला है उनका, वो ऐसा कुछ बोलते हैं ना, साला जोधा भाई का भाई. जी तो दादा बीपी दादा अब अपना बबलू भी नहीं है अभी, नहीं तो मैं आपसे पूछता हूँ
आपने तो रामायण लगता है पढ़ी हुई है, मुझसे ज्यादा आपको पता है। वाल्मीकि और तुलसीदास जी की रामायण में फर्क क्यों है? फिर जब एक कहानी हुई है उसको तुलसीदास जी ने अलग रंग, जो सीता जी का, माँ सीता का करके वो एंड में, क्या उसका क्या रीजन हो सकता है? नहीं, अभी जैसे एक मैं बताऊं आपको, आज से 300 साल पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में जो कोई लिखेगा वो अपने तरीके से लिखेगा। तुलसीदास का क्या था, तुलसीदास जी हमारे राजापुर में पैदा हुए थे, वो जो बांदा जिले में आज के डेट में चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में यमुना किनारे है, वहां पे पैदा हुए थे। तो बेसिकली ही वाज, क्या बोलते हैं, भैया बोलेंगे या अवधि, अवधि में वो ज्यादा, उनको अवधि और बुंदेलखंडी ज्यादा आती थी उनको। तो उस समय जो उन्होंने लिखा है वाराणसी में जाकर के, वो जो सुना था, क्या हुआ, सब दिल निकल गया? नहीं है तो अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो वाराणसी में उन्होंने अपने जो ऋषि मुनि थे, जो महंत लोग थे, उनसे जो सुना था और जो उन्होंने बोला था कि हाँ भाई ठीक है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मतलब उन्होंने कॉपी नहीं किया वाल्मीकि रामायण को। ऐसे कंबन रामायण है जो साउथ की है, उसमें भी डिफरेंस है ना। तो ये लोग क्या करते थे, सुनते थे और सुन करके उसी को रिसाइट करते रहते थे। तो उसी तरीके से उनको जब बोला गया तो उन्होंने अवधि में, अवधि बोलते ना दादा, अवधि में ना, हाँ अवधि में जो उनके है, अवधि है, अवधि में उन्होंने उसको लिखना शुरू किया था। अब उसमें जो जुड़ गई हैं कहानियां वाल्मीकि रामायण के बाद में, जो लोगों ने जोड़ी हैं, जैसे उस समय के वातावरण में या उस समय के एटमॉस्फेयर में जो भी प्रिवेल कर रही होंगी कहानियां, उनको भी जोड़ दिया उन्होंने। चलो ऐसा कुछ हुआ होगा एक्चुअली, बाकी ज्यादा कोई ग्रास डिफरेंस तो है नहीं, क्यों सब जी तो दादा डिफरेंस वही। सॉरी एम दादा, मैं एक बात, नहीं बोलिए। तो आजकल जो एंटी हिंदू है, कम्युनिस्ट जो है, उसको मौका मिला हुआ है ना कि राम ने अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ दिया। तो वो तो वाल्मीकि में भी है वाल्मीकि में? नहीं सर, नहीं सर, क्यों वाल्मीकि में, वाल्मीकि में जिस वाल्मीकि में ये नहीं है कि सीता जी जब गए थे, वाल्मीकि ने तो उनको अपने पास में बिठाया रखा था। दैट टाइम शी वाज प्रेग्नेंट। निखिल जी ने पीछे कुछ महीनों पहले कुछ था तो सर मुझे तो मालूम है कि उन्होंने राम और सीता जब वापस अपने यहाँ पर उनको शरण दी थी वाल्मीकि के पास में, जब गई थी वो वाल्मीकि आश्रम में तो गई थी सीता जी जब निकाला था इन्होंने। कुछ डिफरेस है। आई वाज सरप्राइज, किसी ने कुछ बोला था, मेरे को ध्यान नहीं। चलो निखिल जी आएंगे कभी तो। अगर वाल्मीकि रामायण में सीता को प्रेग्नेंट नहीं दिखाएंगे तो फिर सीता के बच्चे कैसे पैदा हो गए? क्या वाल्मीकि के पैदा थे क्या वो? वाल्मीकि रामायण में राम और सीता जो है राज करने लगे, उसके बाद और कुछ नहीं है, ये बाद में जोड़ा गया सब। तो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि रामायण कहाँ खत्म हो जाती है? वो जहाँ राम जी वापस आते हैं अयोध्या सीता जी के साथ, दीपावली पे खत्म हो जाती है दादा। जी, उसके बाद नहीं है। लो प्रदीप आ गया, इसको पता होगा। तो ये जो तुलसीदास ने जोड़ा, ये कहाँ से लेकर, कंबन रामायण में है क्या? ये तो किसी और रामायण से उठा लिया होगा या अपनी मर्जी से जोड़ दिया होगा। नहीं, ये क्या है, तुलसीदास जी चित्रकूट में बैठ करके, चित्रकूट में वो जो नदी है ना, पैसुनी नदी, वहां पर बैठ करके दुनिया भर कथाएं सुना करते थे। तो होता था कि किसी मतलब पहले किसी गुरु ने या किसी महंत ने सुनाई हो कहानी, ऐसा भी हुआ था। बाद में पूछते होंगे लोग, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। अभी रामचरितमानस में तो वहां तक भी शायद वो जो क्या है, उत्तरकांड ना, उत्तरकांड के बाद में क्या, हाँ उत्तरकांड में तो सरयू नदी में जाके उनको समाधि भी लेते हैं, जल समाधि भी लेते हैं रामचंद्र जी, वो भी दिन बताया हुआ है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ये सब नहीं है। वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग नहीं है। एक्चुअली क्या नहीं है, जो जोड़ा है ना अलग टाइम का है, इसलिए उसकी शैली ही चेंज हो गई है। तो इसीलिए तो रामायण नहीं बोलते हैं ना, तो मानस बोलते हैं ना, रामचरित्र मानस। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं रामायण लिख रहा हूं। एनीवे, अब उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाते हम लोग इतना, हम कोई रामचंद्र गुहा बनना भी नहीं चाहते। जो हमारे सामने है उतना रहने दीजिए ना। तो हम कौन सा वाला है बंदा, वो जो जामिया मिलिया वाला है, इरफान हबीब या उर्मिला थापर भी नहीं बनना चाहते।
ये कंट्रोवर्सी में वो मर जाए। हमारे को यहाँ पर इस किताब को पढ़ने का मतलब सिर्फ ये है कि मुझे अपने सनातन धर्म के जो रक्षक लोग थे उनके बारे में जो जो छुपाया गया है हिस्ट्री में उसको बताना है। इस उद्देश्य से मैं इसको पढ़ रहा हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। Kashi Vishwanath temple and the corridor around it, along with a major ghat on Ganga at Banaras, was built by Man Singh. Later, Mirza Raja Jai Singh protected the Sanskrit Vidyapit at Banaras and educated his son Ram Singh over there. Ninth, even in direct combat, there are दादा एक मिनट ये क्या बोल रहा है? काशी विश्वनाथ टेम्पल along with major ghat was built by Man Singh. Now, Kashi Vishwanath temple was built by Man Singh means जो औरंगजेब ने गिराया वो अकबर के, अभी मान सिंह किसके वो थे, कमांडर थे वो अकबर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि काशीनाथ विश्वनाथ टेम्पल वाज बिल्ड बाय अकबर ने फाइनेंस तो किया ही होगा ना उनको। मान सिंह का खुद का अपना थोड़ा ना भी जाके कुछ कर दोगे बिना अकबर के मर्जी के। आगे चलो लो। Later, Mirza Raja Jai Singh protected the Sanskrit Vidyapit at Banaras and educated his son Ram Singh over there. मिर्जा राजा उपाधि, हाँ ठीक है, उपाधि है। Ninth, even in direct combat, there are innumerable instances where Jaipur's Rajputs helped fellow Rajputs escape. In Haldighat, when Pratap had been surrounded by Mughals and most of his ablest generals were dead, it seemed theoretically impossible for Pratap to have escaped if Man Singh and other Rajputs hadn't gone soft on Pratap. Abul Fazl, the Muslim historian at Haldighati, records that the Muslim generals asked Ram Singh to chase and finish off Pratap, but Man Singh ignored him. It was Asif Khan, the Mughal, who sent 2 Mughal officers to chase Pratap, but they were eventually killed by Pratap's brother Shakti Singh. Shakti Singh was working for Akbar that time, isn't it? Okay. At the Battle of Mohi in Christian era 1577, Pratap slaughtered 1,000 Mughals while Man Singh was a few kilometers away and didn't lend help to the Mughals. Man Singh did the same with Amar Singh too. After Pratap's moksha, Man Singh kept postponing the attack on Amar Singh. Akbar was very unhappy with Man Singh for his softness towards Pratap and Amar Singh, but Man Singh was too powerful for Akbar to be subjugated into compliance. 10th, amidst all the criticism of Man Singh for fighting Pratap at Haldighati, historians and Hindu opinion makers overlooked the war pursuits of Man Singh elsewhere in the region. Man Singh led Mughal forces against Afghan rebels and crushed the Afghans mercilessly. Shouldn't Hindus be grateful to Man Singh for arranging the slaughter of one Muslim army by another? A Mughal Afghan alliance would have surely Islamized entire Bharat. Had Man Singh not crushed Afghans using Mughal war machinery and Afghans had marched to the western fronts of the land, can we even imagine the consequences of a truce between Mughals and the Afghans? Man Singh undertook similar campaigns in the rest of Bharatvarsh, especially Bengal, where he again pitched one Muslim army against another. Hindus should be grateful to instead of being contemptuous of this great Rajput king of Jaipur. Yes, his attack on Pratap at Haldighati evokes revulsion, but kings and nobles bear huge paradoxes on their shoulders, and we should look back at them with compassion instead of judging them with a one-sided worldview. Harkubai. अच्छा यही है वो जोधा भाई Raja Bharmal. Lastly, many stories have been floating around about the real identity of Harkubai, daughter of Jaipur's king Bharmal. Some say she was not actually the daughter of the king, but a maid's child whose true lineage was found once married to Akbar.
On hearing about the marriage of an inconsequential girl to Akbar, the fourth Sikh Guru, Sri Ram Das, is supposed to have said in jest, Rajputs too have learned the art of politics. अच्छा, Some even say that she was a Portuguese slave purchased by Jaipur royals and passed on to Akbar. This particular account does not stand the test of logic and record, as there are no records of such a slave in Jaipur's annals. Secondly, all his life, Man Singh's loyalty to this queen of Akbar implies she must have been a relative of some consequence. But one last thing must be mentioned about this episode of Harku marrying Akbar. Harku was converted to Maryam ul Zamani at the time of marriage itself. Hence, those scenes of Akbar celebrating Janmashtami in the Bollywood movie Jodha Akbar and Mughal Azam are lies perpetrated to influence gullible Hindus into believing the mirage of a Ganga Jamni Tehzeeb when no such culture ever existed. Akbar was Khuni Azam, who was prevented from Islamizing a glorious Vedic Bhumi by the great Maharana Pratap Singh of Mewar. All that can be said for Jaipur Rajputs is that life does not always grant us the luxury of choices. We have to make the best out of a given situation. Prima facie, what looks like an alliance of the Rajputs of Jaipur with Islamic invaders might actually have been just a stopgap arrangement to tide over the difficult fortunes of Hindus at the time. One may agree or disagree with what the Jaipur Rajputs did, but none can doubt the commitment of Jaipur's royal house to Sanatan Dharma. During the subsequent wars with Mewar, though Jaipur sided with Akbar because of the reasons mentioned above, we find numerous incidents during the war and in Akbar's court where Man Singh helped fellow Rajputs of Mewar directly or indirectly. These incidents will be mentioned when we discuss the battles in the chapters that follow. We must remember that Jaipur's Rajputs claimed direct descent from Kush, the second son of Bhagwan Sri Ram. Given this background, it can be reasonably inferred that the alignment of Jaipur with the Turks for a brief interim was a mix of the geopolitical situation prevailing in those times and also the vulnerability of Jaipur being in close proximity to Delhi. But above all, Hindus must remain eternally grateful to the Rajputs and the people of Jaipur for never having thought of converting to Islam. Though we have examples of the Sisodia chief, the nephew of Pratap, son of his brother Sagar, converting to Islam and becoming Muhabbat Khan, or a Rathod from Nagaur converting to Islam, there is not a single instance of a Kachawa Rajput of some consequence converting to Islam. In spite of matrimonial bonds with Islamists, there is no mention of even a small chieftain of Amer converting to Islam. This must have taken an extraordinary strong resolve and deep commitment to Sanatan values. By no means is this a small achievement, considering the aggressive proselytizing nature of Islam and how this ideology devoured the entire Middle East in a few decades. Jaipur, however, stood like a bulwark against conversions. Its alliance with Mughals was thus a temporary compromise of the Jaipur house to tide over the crest of the Turk fortunes. Jaipur's kings clearly laid down the condition to Mughals that the temples and forts of Hindus would not be destroyed in lieu of their services. Aurangzeb broke this truce by ordering the destruction of Hindu temples and obtained the revolt of Jaipur's and Jodhpur's Rajputs in return. At the time of Aurangzeb, Jaipur's Mirza Raja Jai Singh formally distanced the Jaipur Rajputs from Mughals. Jai Singh was dispatched by Aurangzeb to fight and capture Chhatrapati Shivaji Maharaj. In Christian era 1665, Jai Singh concluded the Treaty of Purandar and sent Shivaji Maharaj to Aurangzeb's court on personal guarantee. Jai Singh wrote a letter to his son Ram Singh that should Aurangzeb break his promise and ill-treat Shivaji, Ram Singh should arrange his escape from Agra. Jai Singh's suspicion proved correct.
वाह, औरंगजेब क्या बात है। ये देखो, ये भी हिस्ट्री से छुपाया गया है। जी, ओह, 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 Jai Singh's suspicion proved correct. Aurangzeb arrested Shivaji and put him in Ram Singh's palace. Ram Singh arranged Shivaji Maharaj's escape in a fruit basket and ensured his safe passage back to his kingdom. Aurangzeb held Jai Singh responsible for Shivaji's escape. On 16th of July, in Christian era 1667, Jai Singh was poisoned in Burhanpur by a maid on instruction from Aurangzeb. This has been adequately recorded in Jaipur Annals and quoted by Shamal Das and Veer Vinod. Thus, Jaipur's royal house sacrificed their king to keep the fire of freedom alive in South India. The murder of Jai Singh has been described in detail in the chapter on Raj Singh as well. The only permanent blot on the name of the Amer house is the third Saka of Chittor in Christian era 1568. Bhagwan Das of Amer not only fought for Akbar and mercilessly wiped out a tiny army of 8,000 Mewar warriors, but also stood as a meek witness to the slaughter of 30,000 innocent civilians by the Turkish barbarians. There is no rationale for Bhagwan Das witnessing the murder of fellow Hindus silently. Jaipur's Rajputs should have revolted and laid down their lives fighting the Mlechas instead of impotently watching their brothers and sisters being butchered on that fateful day. The Hindu army of Jaipur should have revolted on witnessing the desecration of their gods and temples. Though it should be noted that there is not a single mention by Abul Fazl, Badayuni, Farishta, or any Muslim historian about slaughter of Hindus by Rajputs of Jaipur. It is possible that the Rajput army of Jaipur wasn't allowed to enter the fort that fateful day, else there would have been revolt by Rajputs on witnessing the desecration of their temples. All said and done, the plot of the third Saka Johar will remain forever on the ancestors of the Rajputs of Jaipur. Akbar was a very shrewd man with an equally cunning advisor in Bairam Khan, who knew that Hindus could not be subjugated in a frontal attack. Minarets of Hindu heads raised by Akbar the Great after second battle of Panipat in 1556 Christian era. Akbar very smartly observed and capitalized on the fault lines of Hindu kingdoms, especially the Rajput kingdoms of Amer, Marwar, and Mewar. After defeating and beheading Raja Hemchandra in the second battle of Panipat, Akbar organized the northern states around Delhi, with the Malwa Sultan pledging allegiance to him. Raja Bharmal of Amer was the first one to capitulate and give his daughter Harko Bai to Akbar in matrimony. Bharmal's son Bhagwan Das became the main general of Akbar's army and was with him during the siege of Chittor in between 1567 to 68. Akbar's insistence on subjugating Mewar arose from his understanding that the house of Mewar was the one that stood against the Islamic plunderers. He knew as long as Mewar was unconquered, his dream of Islamization of the region could not be achieved. Akbar also knew that Mewar was significantly weakened after Sanga's demise and that Uday Singh was a weak king. Akbar hadn't encountered Pratap until then, though he had heard stories of the amazing strength and valor of this prince of Mewar. Pratap was a first-hand witness to the slaughter of Chittor by Akbar, and the Saka and Johor of 1568 was stuck in his heart like a thorn. Pratap had lost more than 500 close relatives in the Saka Johor. Hence, he made the vows of penance, which have been detailed in the chapter on the ascendance of Pratap to the throne of Mewar. Pratap was deeply scarred by the loss of Chittor. The once invincible fort of the Sisodias was rendered indefensible against an army of marauding mercenaries. The abode of regality that had reared her head above all cities of the land became the refuge for wild beasts. Pratap was a strong believer in Hindu unity against the Turks, and the act of Bharmal marrying off his daughter to them deeply disturbed him. He saw through the cunning move of
Akbar to infiltrate the royal Rajput bloodline and chose to resist it tooth and nail. In many of the couplets and poems of those times, Pratap is quoted to have said that whatever fate befalls Mewar, no Sisodia daughter will warm the bed of a Turk. Once Akbar, frustrated at Pratap's belligerence and continued resistance, spread a rumor in Delhi court that Pratap had sent an emissary to talk of surrender. A prince of Bikaner, Prithviraj, though serving Akbar, was proud of Pratap in his heart and wrote the following couplets to Pratap. If Pratap is going to refer to Akbar as an emperor, then the sun might as well rise from the west. Tell me, O mighty Pratap, shall I continue twirling my moustache or kill myself with my sword? Wow. Pratap replied thus, I will refer to Akbar as a Turk as long as there is life in this body. The sun will rise from the east only, as long as my sword is on the neck of Yavanas. Keep twirling your moustache. Pratap will bear every blow on his head. May you be victorious in this battle of words with the Turk. So, despite Pratap's vision and desire for Hindu unity, Akbar's cunning moves forced Pratap to travel the path of frontal adversity with him and his Hindu vassals. But Pratap kept humoring fellow Rajputs and never belittled them for aligning with Akbar. The Rajputs and Charan, Bard, जो गाना गाते हैं, courtiers of Akbar also provided him with vital information about Akbar's moves from time to time. Pratap knew that every Hindu courtier serving Akbar was actually with him, that is Pratap, and he alone was the hope of Hindu revival in the region. He therefore kept enduring the hardships of mountain warfare, and in doing so, kept hope alive in every Hindu heart. It is easy for us to look back at the events that unfolded 500 years ago and analyze how Akbar's reign was singularly responsible for the destruction of Hindu ethos, culture, and social system. But for a contemporary Pratap to witness and anticipate this damage is an amazing feat that aptly demonstrates his foresight and vision. Pratap also witnessed Akbar luring and helping the rebels and enemies of Mewar, and this only deepened his enmity with Akbar. But most importantly, if we look at the entire history of the royal lives of Mewar, from Bappa Rawal to Uday Singh, it can be easily deduced that Pratap perfectly understood the plan of Islamists and found Akbar to be the epicenter of that plan. This included instigating infighting amongst Hindu kings, inviting foreign mercenaries like Bahlol Khan from Uzbekistan, and creating a fully armed wing of hired killers, suppressing and killing his own loyalists ruthlessly. For example, chasing and capturing his main benefactor, Bahram Khan, and marrying his wife. This is correct. All Islamic invaders were treacherous, immoral, and obsessed with a lust for power. It is a fact we have established in this book, but the Mughals took it to the next level. Babur himself talks of using poison as a tool of war in his memoirs. Humayun ran around the north and northwest to save himself, so we will never know about his love for poisons. Akbar is documented to be a collector of various kinds of poisons. He had an officer appointed to monitor and deliver the desired poison when asked for. Akbar had specifically designed long robes, known as khilats, with their collars and arms laced with poison. He used to give these khilats to his enemies and thus eliminate them. Rajendra Shankar Bhatt quotes Italian physician traveler Manucci. Akbar killed a lot of kings and nobles whom he considered a threat to his rule. Manucci visited India during the reign of Shah Jahan and Aurangzeb and writes, this concealed way of killing people was widely prevalent when I was in the Mughal courts. Akbar had poison tablets for his enemies. It is said that Akbar himself died by consuming one such tablet accidentally. अच्छा ये पता नहीं था सर, लेकिन रेफरेंस है इसमें 103 लिखा हुआ है रेफरेंस, ये मुझे पहला बार पता चला.
Italian traveler. Niccolò Manucci. Aurangzeb was a master in this craft of using poison. Aurangzeb was a master in this craft of using poison. He first eliminated Prithviraj, the gallant son of Jodhpur King Maharaja Jaswant Singh. He then eliminated Jaswant Singh himself by poisoning. Aurangzeb then poisoned Mirza Raja Jai Singh of Jaipur and Maharana Raj Singh of Mewar. Both these murders have been dealt in the chapter on Raj Singh. So, according to the Dhimmi, leftist, jihadi cabal occupying the intellectual space of this nation, a person and a dynasty which murdered people in this manner were great people whose examples we should all follow. I leave it to the judgment of the reader whether they agree with this cabal or think otherwise. Another very evil and humiliating practice deserves mention here, as it was a cornerstone of Pratap's hatred for Akbar. It was the practice of Navroz, meaning 9 days, not to be confused with the Persian festival of Nowroz. Akbar used to hold a 9-day fair in Agra, where only women were allowed. Akbar would attend this fair in disguise to pick women who caught his eye. Once, Akbar is supposed to have passed an edict that every newly married Rajput princess should have to spend the first 9 days of her marriage in Akbar's harem. The Rajputs, of course, revolted, and Akbar was forced to withdraw this humiliating Farman edict after a few weeks. The official records of Navroz are patchy and inconsistent, but a lot of local literature of Rajasthan endorses this demeaning practice being promulgated by Akbar. Perhaps news of this practice reached Pratap, and the resolve to fight Akbar only strengthened. Navroz was one of the main reasons, besides the Saka Johar of Chittor, for Pratap's hatred for Akbar and his resolve to never even contemplate surrender or alignment with Akbar. Even today in Rajasthan, a folk song, Jald, is sung in marriages, and ignorant Hindus dance to the song of slavery of Hindus, set tune to the original folk song, Panihari. This song describes the marriage procession of Akbar. The writer has personally witnessed this blind indulgence of ignorant Hindus. This is a song that should be forever removed from the social space of Hindu society. एक मिनट दादा, एक चीज यहाँ और मैं ऐड कर दूं. अब इस गाने, ये तो न्यूज है मेरे लिए, जो गाना, एक गाना और गाया जाता है जो हिंदू सिंगर्स भी बड़ी खुशी से गाते हैं. छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिला के. वो सूफी साले गाते हैं. मतलब नहीं, सूफी तो गाएंगे क्योंकि वो मुस्लिम है. ये जो हिंदू भी जो हैं, चाहे लड़कियां हो चाहे वो हो, ऐसा गाते हैं कि जैसे पता नहीं सीधे कृष्ण भगवान से नैना मिल गए उनके. पता नहीं क्या. बस यही कहना चाहता था दादा. सर, इसके पहले वाला पेज पे यही है. नहीं, कहाँ गए थे हम लोग? इसके बाद Italian writer and traveler Niccolò Manucci. Hindu society. This is a song that should be forever. इसके बाद यही वाला है. Italian writer and traveler Niccolò Manucci, in his book Storia do Mughal, or History of the Mughal Dynasty in India, described Akbar's harem as follows. A policy that he employed was to contract in marriage with the Raja's princesses. By means of this Mahometan women, he embroiled the Rajas in perpetual wars with one another. Manucci, who has professed to writing only that which he had seen with his own eyes during the Mughal era, also wrote about how Meena Bazar served as a platform to recruit Hindu women into the Mughal harem. Though Meena Bazar was supposed to be a woman-only affair, Akbar was said to have disguised as a woman and entered the fair. Abul Fazl Likra. The writer's interest in quoting this horrible practice is only to show the power of Rajput kings who forced Akbar to withdraw this demeaning farman. To contrast this Islamic trait of Akbar of exploiting enemy womenfolk with Pratap's
dharmic value system, an incident is quote-worthy. In 1585 CE, Akbar dispatched Abdul Rahim Khan Khana to defeat and arrest Pratap. When Khan Khana was camping near Abu, Kunwar Amar Singh managed to lay hands on the daughter and a few other women of the Khan Khana's family. Amar Singh captured and brought them to Pratap. Pratap was furious at Amar Singh and said, "What is the difference between us and that mlech Akbar if we also start attacking women in war? Is this the way of Hindus? Let Khan Khana's daughter tie a Rakhi thread to your wrist and make her your brother. Then personally go and drop them to the Khan Khana's camp." Amar Singh apologized, got a thread tied to his wrist, and dropped off the women to Khan Khana's camp himself. Khan Khana was a deeply spiritual person. He later renounced Islam and became a Krishna devotee. Khan Khana was a Shia Muslim and son of Bairam Khan, Akbar's mentor. He was deeply moved by Pratap's gesture and returned to Agra without attacking Pratap. When Akbar questioned him why he didn't fight with Pratap, he gave a reply that has been written in golden words in history. He replied, "One can only fight with mortals. One can't fight with angels." Have we ever paused and wondered about the contrasting moral compasses of Akbar and Pratap? What is the code of conduct for a civilized society to follow? Pratap's or Akbar's? The leftists and pseudo-liberals inhabiting this nation who continue to teach our children that Akbar was a great ruler must be compelled to realize the dangers of their false claims. Do we want our children to follow Akbar's footsteps or Pratap's? Hindu society has to look deeply into this question and come up with an answer. This amalgam of diffuse morality cannot be allowed to confuse our children anymore. Either the dignity of a sister or a daughter is a non-negotiable entity, as in Hindu Dharma, or women folk of a society are mere objects to be bartered or crushed by brutes in the mad desire of a faith to overpower this world. Either women are goddesses who bless us with life and joy, as in Hindu Dharma, or they are commodities to be used and thrown. If we glorify the vices of a rapist Akbar to our children, we will have to witness the degradation of Sanatan Dharma into a misogynistic cult. On the other hand, if Pratap's truth is taught in our schools, our children will be dignified and honorable citizens of our great nation. A nation cannot have two ideals. If Akbar is indeed great, then let us forget Pratap. If Pratap is great, then Akbar must be thrown into the dustbin. This massive schizophrenia of Hindus accommodating two antagonistic worldviews has resulted in supreme confusion and stupefied our society into inertia and inaction. If we do not stand for our principles, we are not even human beings. Hindus have to decide now who will rule the psyche of Hindus, Pratap or Akbar. Answer to this question will decide if we will perish or prosper in coming years. Akbar was a cunning debauch who exploited Hindu women regularly and slaughtered Hindus without mercy. What did he contribute to the ethos of this great nation that he is adorned with such laudatory adjectives? Akbar was a cold-blooded murderer who pursued his ambition of Islamizing the Indians in the subcontinent with unmatched passion and fervor. Pratap knew that he alone stood between Akbar and his design of Islamization of Hindustan. Pratap knew that without him standing, the Hindus of this great land would be forced to convert or die piecemeal. Without doubt, if we are Hindus today, it is largely due to that one man, Maharana Pratap Singh of Mewar. This awareness itself should be sufficient for us to raise Pratap to a level of Mahapurush, great being, and bow our heads in reverence to the amazing resistance that he put up and took its logical end, all on his lonely shoulders. ओह, दादा मैं शुरू के 5 मिनट लेट था। ये किताब किसने लिखी है? उमेंद्र रतनू की है। रत्नों की, ठीक है।
ये किताब मैं ले लिया हूँ सर। हाँ, द्वंद कहाँ तक बाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का बंसज फेंक जहाँ तक बाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का वहीं उछाला जाए। वाह क्या बात है, बड़ी अच्छी बात लिखी प्रेम जी, दोनों तरफ लिखा हो भारत। देखो बीबी दादा, एम दादा, हम हिंदुओं को हमारे जो आइडियल्स है ना, उनमें मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल। अब जो महाभारत लड़ी गई कि रात के समय में हम लड़ते नहीं है, वो ठीक है, वो उस टाइम पे अब्राहमिक फेथ नहीं थे। पीपल अबाइड बाय दोस कोड ऑफ वॉर, जो भी रूल्स थे। अब टाइम बदल गया है। हाँ, अगर दुश्मन की महिलाएं हमारे हाथ लगती हैं तो उनका हम वो नहीं करेंगे जो इस्लाम करता है, ठीक है ना। लेकिन इतना भी हो कि आप उनको अपने घर में ले आओ, वो फिर धीरे 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 दीमक की तरह आपकी दीवारों पर लगना शुरू हो जाएंगी। हमने 90,000 सैनिक छोड़ दिए ना। आज कल या परसों ना, परसों पाकिस्तान वॉट, कौन सा सेलिब्रेशन डे था उनका? आई डोंट नो विक्ट्री सेलिब्रेशन होता है ना उनका, शायद कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है। मैंने विक्ट्री सेलिब्रेशन ऑफ 65 वॉर, they never acknowledge that they were defeated repeatedly। उनको यही पढ़ाया जाता, और ये भी सुनने को आया कि हम लोग जैसे ई पढ़ाते हैं ना, उन लोग दिखाते हैं कि हाँ जहाँ है मान लीजिए, तो हिंदू को एकदम जो है बहुत मतलब गलत वे में पोर्ट्रे किया जाता है। से मान लीजिए काफिर है तो कोई दिखाएगा कि हिंदू क्रिश्चियन सब झुक रहा है, इस तरह। मतलब स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल्स की किताब में है ये, और ये पाकिस्तानी बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। आज की डेट में दादा, ये जो रत्नू ने लिखी है ना बुक, इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज मोदी गवर्नमेंट इज देयर। जी जी। दूसरी कोई अगर गवर्नमेंट होती ना तो बैन कर देते, बैन कर देता। जी जी। तो ये कंट्रीब्यूशन है मोदी गवर्नमेंट का, ऐसी बात नहीं है। वी आर कमिंग विद, मतलब वी आर नोइंग द रियलिटी बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट। अदरवाइज कोई भी जाके इसको मार भी देता कि तुम क्या लिख रहे हो, कोई फतवा जारी कर देता कि अरे तुम अकबर के बारे में ऐसा क्यों लिख रहे हो, वैसा क्यों लिख रहे हो, वो तो ग्रेट है। तो हमारे यहाँ पर जो 500 साल से जो गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई, पहले मुगलों ने पढ़ाई, बाद में वो 150 साल अंग्रेजों ने पढ़ाई, और 70 साल करीब ये जवाहरलाल नेहरू और उसकी बिटिया ने पढ़ाई, और उसके पोते ने पढ़ाई या नाती ने पढ़ाई, किसने पढ़ाई, वो गड़बड़ कर रहा है ना। हमारे जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं 3rd 4th में, एनसीईआरटी की बुक हो या कोई भी बुक हो बोर्ड की, उसमें वही लिखा होता है अकबर द ग्रेट। कर लो बात, आज भी है। हाँ। और जो उसको सिलेबस चेंज करने की कोशिश करता है तो इनके छाती पीटने लग जाते हैं, हे भगवान तुम चॉकलेट को ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, बकवास करते हैं। अभी तो ये उदयनिधि जैसे लोगों की हिम्मत पड़ती है ना कुछ बकवास करने की। अब इस बुक को कहीं पर टेक्स्ट बुक नहीं बनाएंगे ये लोग, कहीं पर ग्रेजुएशन में हिस्ट्री की बुक में जो बना दे टेक्स्ट बुक नहीं बनाएंगे ये लोग। प्रोफेसर इस बुक को ना बनाए, इस बुक को ना बनाए, लेकिन रेफरेंसेस यहाँ है उसको तो यूज कर सकते हैं ना। कुछ नहीं सर, हम आप जैसे करेंगे, बाकी जितने भी जिनको सुबह से शाम तक में पैसा कमाना है ना, उनको कोई मतलब नहीं होता। सुबह से शाम तक पैसा कमाओ, इलीगल तरीके से पैसा कमाओ, शाम के टाइम में जाके रंडीबाजी करो, गुड़गांव में जाकर दारू पी लो, आके सो जाओ, बस। बाकी तो जो देश की जो सुरक्षा कर रहे हैं वो तो मरने के लिए तैयार बैठे हैं ना, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। साले कुत्ते कहीं के, पता नहीं कैसे लोगों को। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आज दादा काफी गर्म है गुस्से में। जोरी जोर, अरे मेरे को आंसू आ रहे थे पढ़ते पढ़ते सर। क्या मतलब क्या बोलेंगे, क्या बताया, क्या पढ़ाया है, कैसे किया है, क्या किया है, उसको चूतिया को हम लोगों ने भी 7वीं में पढ़ा है उस अकबर द ग्रेट के बारे में। साल इतिहास हर वार्षिक परीक्षा में सर रत्नू जी ने कहा था कि वो राणा संग्राम सिंह के साथ जब लड़ाई हो रहा था बाबर का, वो जो लड़ाई हो रहा था, तो उनके पास
तोप नहीं थे, बंदूक नहीं थे, तो वो अपना राजपूत सैनिक अपना सर तोप के ऊपर डाल देते थे, इससे उनका जो तोप वो ब्लॉक हो जाए। पढ़ा है, पढ़ा। वो तो इनके साथ हुआ हाँ, ना, ये बॉम्बर का जब लड़ाई हुई थी ना। वो सही बोल रहे हो हिरन, में सही बोल रहे हो। हल्दी घाटी की लड़ाई हारे नहीं थे वो। इट वाज वो अकबर तो भाग गया था वहां पे, शायद आया भी नहीं था अकबर वहां पर। जी जी जी। नहीं, वो युद्ध मेरे ख्याल से ड्रॉ हो गया, क्योंकि अगर मुगल जीतते तो वो वहां के सभी पुरुषों को मार देते और उनके नारियों को मतलब बंदी बना के ले जाते या फिर रेप करते। ऐसा हुआ नहीं, मतलब वो मैच ड्रॉ हुआ। सॉरी, मैच नहीं, सॉरी, गलती से मुंह पे मैच निकल गया, वो युद्ध ड्रॉ हुआ। ईरान में तो क्रिकेट बड़ा देखते हैं आजकल। हाँ, सारा सब कुछ मैच ही है। हाँ नहीं, मैं गलती से मुंह से मैच निकल हाँ गया। हाँ हाँ, समझ गया। देखो, हाँ, परंतु हमारे जितने भी योद्धा थे, मैं केवल महाराणा के प्रताप की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक महिला थी जो नायिका देवी, उन्होंने मोहम्मद घोरी को हराया था एक बार, परंतु उन्होंने भी पता नहीं सद्गुण विकृति हो गया, उन्होंने उनको जाने दिया। ज्यादा बड़ा अच्छा लगा ये आर्टिकल आपने पढ़ा, मैं भी सुनता रहा हूँ, मैंने भी पढ़ा है। जी सर, जी सर। लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। वो श्योर सर। वो पास था जितना उस टाइम का जो एजुकेशन मिनिस्टर था वो भी सुमर था। उसने मुझे ये तो बता दिया कुतुब मीनार कुतुब ने बनाई है, जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनाया, ताजमहल बनाया शाहजहां ने, उसकी 24वीं बीवी। लेकिन हरामजादा ने ये नहीं लिखा कि कारीगरी क्या करते रहे, कहाँ से आए थे, कौन थे, कितनी इनकी बीवियां थी, क्या क्या ये करते गुजारते थे, क्या इनकी जीवन शैली थी। अगर मैं कहीं जाता हूँ, आपके घर आता हूँ, फर्स्ट मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ ना, मैं किसका बेटा हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है, कुछ नहीं बताया जी जी। सिर्फ यही बताया गया कि शाहजहां के कितने बेटे थे। भाई मुझे क्या लेना वहां आज उसके कितने बेटे थे, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। और भूल जाइए उन बातों को। 1947 में देखिएगा आप, जो राजपूत लोगों ने जितने बड़े बड़े, मध्य प्रदेश से लेके आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल और राजस्थान, 6054 रियासतें ऑलमोस्ट थी। तो क्या इसने बकरीबाज ने और इसने नेहरू ने, मैं तो इवन पता नहीं गलत हूँ या ठीक हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी मानता हूँ कि उसने भी डिसीव किया है। जी जी। सारे रियासतें, बड़े बड़े किले, सारा कुछ गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिया, उसके एवज फेम क्या मिला? हिस्ट्री मिटा दी गई। आज मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताता हूँ, अगर इंडिया में ये रियासतें होती और ये कहते हैं कि वी वांट बी लाइक इंडिपेंडेंट होते, तो आज इंडिया ये ना होता जो आज है। G20 के आज दुनिया भर की यहाँ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं ना, बहुत खुशी होती है देख के। लेकिन लोगों ने बलिदान दिया है भाई, ये नेहरू ने और गांधी ने एक रात में नहीं किया। और मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान के फेलियर का एक ही कारण है कि वो वहां जो रियासतें थी ना, वो उनको डिमोलिश नहीं कर पाए। वहां कोई प्रधानमंत्री बने, कोई प्रेसिडेंट बने, किसी गवर्नमेंट आती है, वहां जो कबीलावाद है ना, जो सरदार है आज भी काबू, इसका ज्यादा आवाज चली गई है। जो प्रेम जी कह रहे हैं ना, जी दादा, वो जो पाकिस्तान में कहते हैं ना वडेरे, जो जिनकी जागीरदारें हैं, और इंडिया से भी वही मुस्लिम जो अशराफ जिसे कहते हैं एलीट, जिनको था कि भाई हमारी रियासतें थी, ये उन्हीं का ज्यादा जोर होगा ना कि भाई हमारी तो यहाँ से रियासतें खत्म हो जाएंगी,
जो अय्याशी लगी हुई है 6-7 सालों से, तो कितने सारे जो एलिट्स थे वो चले गए होंगे पाकिस्तान कि भाई वैसे ही हमारी रियासतें होंगी। तो ये हाल है आज पाकिस्तान का। आवाज आ रही है प्रदीप? जी आ रही है, आ रही है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो जो प्रेम जी कह रहे थे, ये वडेरा सिस्टम तो अभी भी, और अगर आप मेजर गौरव आर्य को सुनो, वो यही कहता है ना कि जो भी जनरल बनता है वो ज्यादा नहीं, सारे पंजाबी उससे हैं। जी जी जी। ऑफिसर्स उनके सारे पंजाबीज हैं, और नीचे सारे वो कोई बलूच है, कोई वो है। पश्तो है, बलूच है। बिल्कुल। तो वो तो चाहेंगे कि मतलब कुछ गड़बड़ हो, अंदर अंदर तो उन लोग कोसेंगे ना पंजाबियों को। अब दादा, वो अब एक आर्मी इंस्टीट्यूशन जो है ना, डिफेंस रह गया है कि जिसमें अगर आप चले गए तो आपको सैलरी मिल जाएगी। जब भी इनको लोन मिलता है कहीं से, सबसे पहले उस लोन के पैसे से वो आर्मी का बजट, चाहे उसमें से जो भी उनको करना है, प्राइमरली उनको सैलरी चाहिए ना, सबसे पहले वो जी अपना जी हिस्सा जी। उसमें निकाल लेते हैं। तो एक आम जो बलोच है, वो पठान है, अगर उनकी आर्मी में है, वो कहेगा चलो यार, मेरे को भी घर है, बच्चे हैं, बीवी हैं, कम से कम मेरे को सैलरी तो मिल रही है ना। नहीं, आज बगावत जो हो रही है इसी के वजह से ना। लोग तो अंदर अंदर चाहते नहीं है कि हम इनके अंडर में रहें। आप तो सुन रहे हैं कि टीटीपी वाले भी इनको, जब से ये हाँ, तालिबान आए, परेशान कर रखा है हाँ, एकदम। मार रहे हैं हाँ, इनको। मार रहा है दोनों तरफ से, तालिबान मार रहा है, टीटीपी मार रहा है, उधर बलोच वाले मार रहे हैं, कोई छोड़ नहीं रहा है। सारा खबर तो बाहर आता नहीं है, लेकिन जितना भी आता है आप तो समझ ही रहे हो ना पूरा। सॉरी दादा, मैं डिस्कनेक्ट हो गया नहीं, था। कोई बात नहीं सर। हाँ, मैं बात पूरी कर लूँ अपनी। जी जी जी। तो अगर आप भी वहाँ की जियोग्राफी आज भी पाकिस्तान की देखते हैं, वो छोटे छोटे कबीले, सरदार और रियासतें आज भी ज्यों की त्यों हैं जैसे पहले थी। और सबसे बड़ा फेलियर एक टर्माइट कहूंगा मैं, एक टर्माइट की तरह देश को खा गया। देश में कभी लोकतंत्र आ ही नहीं सका इसी वजह से। तो जो ये रियासतें आप लोगों की गई हैं ना, ये फ्री में दी गई थी। कहाँ वो लोग गए, कहाँ उनके मालिक गए? है कुछ हैंडफुल, उमेद पैलेस वगैरह राजपूत बैठे हैं, जोधपुर में है, और इसमें है, जैसलमेर में है, पर कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। वो सिंधिया वगैरह वो फैमिलीज हैं जो पहले आज तक कांग्रेस ने, नेहरू ने अपने साथ लगाए थे। जब उन्होंने देखा कि उनके बैक को स्टैब किया गया है, नाउ दे बैक टू बीजेपी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बाहर बैठे हैं बधाई दूं कि आज बहुत टीवी पे चर्चा देखी होगी आपने, ऑलमोस्ट सारे प्रेसिडेंट और जितने भी गेस्ट थे दुनिया के वो हिंदुस्तान में आ चुके हैं। जी जी। और बहुत परमात्मा करे ये शांति से सारा कुछ हो जाए, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कंट्री के लिए, ठीक ठाक हो जाएगी। क्योंकि हर दुश्मन से खतरा उससे नहीं है जो बॉर्डर से बाहर बैठे हैं, हमें एक दुश्मन से खतरा भाई इन लोगों से जो देश के घर के अंदर बैठे हैं। जी। ठीक है, जैसे कि वो राजीव गांधी का बावला लड़का है, क्या नाम है इसका, पता नहीं क्या, पता नहीं क्या, पप्पू क्या बोल दे, किधर से उसको फायर कर दे, आगे से पीछे से, उसका पता नहीं लगता। पप्पू का भी पास नहीं होगा। हाँ, तो उसका ये चक्कर है। और पाकिस्तान के तो ये देख लीजिए, अब एक भाई अभी कह रहे थे दादा कि पाकिस्तान को सैलरी चाहिए, उनके ऑफिसर को बाहर से लोन लेके। भाई साहब, उनको सैलरी नहीं चाहिए, उनको चंक चाहिए, बिग चंक ऑफ दैट पीस मनी। वो जब बाहर से मांग के लाते हैं ना भीख, वो सैलरी नहीं लेते। उनके जनरल को पहले पॉलिटिशियन प्राइम मिनिस्टर के साथ होता है, भाई $300 मिलियन आ रहा है देश में कर्जा, और वी डोंट वांट आवर सैलरी, वी वांट अ चंक ऑफ इट। नहीं प्रेम जी, एक मिनट, शायद मैं आपको मेरी बात क्या हो रही थी कि जो ऑफिसर्स हैं टॉप के, वो तो पंजाबी होते हैं जनरल, बिल्कुल लेकिन जी, वो बिल्कुल। दादा कह रहे थे ना कि भाई नीचे जैसे एक आम सिपाही है, उसको तो सैलरी चाहिए ना, बलोच, पठान, जो मुहाजिर, जो एक फौजी, जो फ्रंट लाइन वो होता है, इन्फेंट्री, बिल्कुल बिल्कुल।
मैं उनकी बात कर रहा था, वो रिवोल्ट इसलिए भी नहीं करेंगे कि भाई फैमिली है, बच्चे हैं, मेरे को तो सैलरी। आपकी बात ठीक है, वो तो बड़े बड़े प्लॉट ले लेंगे, लंदन में जाके घर ले लेंगे, 150 पापा जॉन पिज्जा की वो ले लेंगे। रिवोल्ट इसलिए नहीं हो रहा कि अभी वो भी जो है ना, उनकी भी मजबूरी है, या तो संगठित नहीं है, उतने रिसोर्सेज नहीं है। तो मैं अगर एक आम सिपाही हूँ, सूबेदार हूँ, या जो भी होता है, भर्ती होता है जवान, तो क्या यार सैलरी मिल जाए मेरे को, बिल्कुल, बच्चों को खिलाना है। बच्चों को खिलाना है। और प्रेम जी, एक बात आपने बोली, मैं उसमें ऐड करता हूँ, और मैं जो कहने जा रहा हूँ वो आप सबको पता है, लेकिन आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आपने कहा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र आ नहीं पाया। प्रेम जी, क्या इस्लाम में लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट है? इनके नहीं, बिल्कुल में बिल्कुल है नहीं, ही बिल्कुल नहीं। आ ही नहीं सकता। लोकतंत्र और इस्लामिक तंत्र ये साथ साथ नहीं चल सकते। हाँ, फतवा तंत्र है। इवन हिंदुस्तान में भी जो मुस्लिम भाई रह रहे हैं, उनकी मजबूरी है, अगर वो आपस में कई 4 आदमी बैठते हैं, मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज में जब पढ़ता था हॉस्टल में, मैंने खुद सुना है, वो ये बात करते हैं, भाई साहब वो पता नहीं क्या उल्टे सीधे गाने गाते हैं वहाँ के। जब हम हॉस्टल में थे वहाँ के कौन सा काबिला कौन सा युद्ध हुआ था, उस टाइम के गाने गाते हैं वो लोग, मतलब झूम जाते हैं वो जब 5 आदमी इकट्ठे होते हैं कि सीरिया बस ये इस्लामीकरण है। उनकी मजबूरी है क्योंकि नंबर्स कम है। ठीक है। मानते वो भी नहीं है। आज भी कई प्लेटफॉर्म पे आके बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर और इंजीनियर्स और साइंटिस्ट, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ये कहते हैं कि जो कुरान है वो पूर्ण संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन की दुनिया में जरूरत ही नहीं है अगर कॉन्स्टिट्यूशन इसको इम्प्लीमेंट कर दें कुरान को। कोई अनपढ़ आदमी, जाहिल आदमी नहीं है कहता, पढ़े लिखे लोग जिनके बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं वो ये बात कहते हैं। तो बताओ कैसे वहां पे लोकतंत्र की कौन मानेगा वहां पे? सर उनको सूट करता है ना, उनको वहां सूट करता है वो, इसीलिए। ठीक है, वहां तो ये फेलियर है। और दूसरी बात ये है, अब आप ये देखें कि जनरल बाजवा हैं, जनरल जितने भी बड़े बड़े जनरल थे यहाँ इंग्लैंड में, यूरोप में, कितने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं इनके, कहाँ से आता है, कैसे ये लोग ट्रांसफर करते हैं पैसे, कैसे इनको ड्यूल सिटीजनशिप मिलती है, कहाँ से इनको लोग मिलते हैं कि ये अंदर घुस जाते हैं ड्यूल सिटीजन। रिटायरमेंट होने से पहले इनके पास अमेरिका का और इंग्लैंड का पासपोर्ट कैसे आ जाता है भाई, पता ही नहीं। यहाँ इंग्लैंड में, जर्मनी में इधर नहीं जाते, और ये आपका क्या नाम है कंट्री, यूएसए का जो सबसे, मैं एक दिन गूगल कर रहा था, ब्लैक हॉक एरिया है, कैलिफोर्निया में पड़ता है, जहाँ बड़े बड़े हॉलीवुड के लोग रहते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं। वहां पे इनकी बिलियंस, मल्टी बिलियंस डॉलर की प्रॉपर्टी है। कहाँ से आया पैसा, कैसे वो ट्रांसफर हुआ पैसा, तो वहाँ कैसे जीते हैं लोग, दुबई वालों इनके। हमारे यहाँ तो जितने प्राइम मिनिस्टर फेल हो जाते हैं या हार जाते हैं, कंट्री में रहते हैं, इनके तो यहाँ या तो मार दिया जाता है या उसको देश निकाला दे दिया जाता है, बाहर रहता है, आयशो आराम की जिंदगी जीता है। तो 4-5 दिन, प्रेम जी, 4-5 दिन पहले स्ट्रीम हो रही थी उनकी, वो जो डॉक्टर इजराइल से हैं, नो मोर जिहाद। तो मैं सुबह उठा, लगाया तो देखा बीबी दादा। मैं कहा चलो, ये हिरन में भी था वहां पर, मैं भी था। आप भी थे ना। सैयद चाचा वहां पर लगा हुआ। अच्छा, मैंने भी ज्वाइन किया, डॉक्टर साहब को लिखा, लेकिन डॉक्टर साहब ने पता नहीं ध्यान नहीं किया होगा। एनीवे, मैं उससे ये पूछना चाहता था, वो सैयद चाचा से, वो जो कह रहा था कि हमारा देश है, संविधान है, उससे सिर्फ एक सवाल ये पहले पूछा है कि तेरे लिए देश का संविधान ऊपर है और कुरान ऊपर है? वो वहीं ढेर हो जाता। वो बोल ही नहीं सकता कि संविधान ऊपर है। तो जितनी बकवास करता है ना वो आकर, तो मुझे मौका नहीं मिला। उससे तो खैर मेरी काफ़ी सच वाला पे और अब्दुल हबीब चैनल पे बड़ी झड़पें हुई। मैंने भी, तो मैं कहा यार ये बुढ़ा आदमी है, कैसे एक्चुअली सोच। एक तो लैक ऑफ नॉलेज है, उसने पढ़ा नहीं है, और वो बाय प्रोफेशन बुढ़ा आदमी है, बाय प्रोफेशन वो है वो जो इज अ ये ब्लू कॉलर गाय, हाँ, मशीनिस्ट कुछ है वो। मशीनिस्ट है जो ये काम करते हैं यार, ये गाड़ियों के इंजन वगैरह का सरफेस वगैरह बनाते हैं। ही बीन डूइंग दैट ऑल हिज लाइफ, और उसको कुरान का भी नहीं पता, हदीस का भी नहीं पता, उसको कुछ भी नहीं पता है। वो सिर्फ इस्लाम का एक सिपाही बन के आता है इस्लाम को बचाने के लिए। लोग सिर्फ उसका मजाक बनाते हैं। उसकी बेटी है, उसकी बेटी ने की है इसमें एमएस की है कंप्यूटर साइंस में। तो वो चाचा को रोज सुनती थी, तो चाचा ने उसको बता दिया, चाचा ने एक चैनल पे कहा है, मैं आपको लिंक दूंगा। तो
वो एक्स मुस्लिम बन गई, उसने छोड़ दिया इस्लाम। अच्छा, तो चाचा अब यही रोनर होता है। अगर चाचा से देखो, किसी भी मुस्लिम से ये सवाल पूछना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी समझदारी नहीं है कि आपके लिए कुरान पहले या देश पहले है, क्योंकि आपको उसका जवाब पता है। दादा, you have to put him on the spot, you नो know. नो नो नो, हाँ, जलेबी बनाएंगे, उसको रोटी बनाएंगे, उल्टी सीधी सेकेंगे। अगर उससे कोई सवाल पूछना है, उससे यही सवाल पूछना है। वैसे तो मुंह ही नहीं लगाना, क्योंकि इनसे अगर ये सवाल पूछा जाता है, ये कहते हैं भाई हमारे यहाँ कुरान में और इस्लाम में देश का कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। ये सारी जो धरती है ये अल्लाह ताला की है, आप कहीं भी जाके रह सकते हैं। हाँ। मैं ठीक है। प्रेम जी, सुनिए मेरी बात। आपने कहा कि मुसलमान से सवाल करना बेकार है, बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन उस मुसलमान से ये सवाल लाजमी है जो भारत के संविधान की बात करता है, तब ये सवाल उठता है। अच्छा, मैंने तो पूछा है, हाँ, एक जवाब देते हैं, एक क्वेश्चन नहीं पूछा, बिल्कुल फेस टू फेस पूछा है। वो कहते हैं इस्लाम जान है और देश शान है। हाँ, फिर बस क्या क्या, कहें? हाँ बस ठीक है जी, फिर तुम कॉन्स्टिट्यूशन की बात मत करो। बस ये मैंने 20 से फेस टू फेस पूछा है, फेस टू फेस। हाँ, जहां मैं रहता हूँ, करीब यहाँ कुछ दिन पहले 300 वोट मुस्लिम वोट्स थी, और बहुत वो लेबर क्लास मुस्लिम है, अनपढ़ जाहिल। लेकिन आज ये देखिए कि वो ही वोट 1300 हो गई है। ठीक है, तो वो सुबह दिहाड़ी पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, कईयों को तो नमाज भी पढ़ने नहीं आती, कईयों को तो कुरान छोड़ कुछ भी नहीं पता, अरबी नहीं पता। लेकिन अगर मरने मारने की मोहब्बत की बात आ दे, सबने तब आगे अब डीपी पे सबने रखा आई लव मोहम्मद, व्हाट्सएप की डीपी पे सबने। तो उनसे अगर ये बात मैं पूछता हूँ, मैं भाई देश पहले है या वो मुल्क पहले है, तो वो कहते हैं देश हमारी शान है और इस्लाम हमारी जान है। और कुछ दिन पहले वो सबको सत श्री अकाल राम राम का जवाब दे देते थे, लेकिन अब वो राम राम का और नमस्कार तो कर लेते हैं, लेकिन सत श्री अकाल का जवाब नहीं देते। हालात ऐसे होते जा रहे हैं यहाँ भी। जी प्रेम जी, आप एकदम सही कहे। मतलब 30 साल पहले भी ये लोग जवाब देते थे, आजकल इतना रेडिकलाइज हो गए हैं, पता नहीं क्यों। अरे एम दादा, वो उनका जो एजेंडा है भारत को इस्लामाइजेशन, मुगलिस्तान बनाने का, उस पर काम हो रहा है। आप नैरेटिव बदल दो हर मुस्लिम का, बस हर हिंदू, हर काफिर, सिख, हिंदू, क्रिश्चियन सब दुश्मन है, काफिर है, दुश्मन है, बस। पप्पू की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है ब्रसेल्स में। जी, वो वहां पे ब्रसल में क्या कर रहा है पप्पू? अरे मोदी साहब यहाँ कर रहे हैं तो उसको भी तो कुछ करना है ना, लेके जाएगा, वहां जाएगा वो। खुराफाती कुछ तो करना है ना। अरे दादा, दुनिया भारत आई भी है, वो ब्रसल में क्या कर रहा है? उसको सुन कौन रहा है? आप ये सुन लो, उल्टा सीधा बकेगा वहां। अरे दादा, इनका ये है ना, कांग्रेस वाले अपनी रैली करते हैं तो वो कहते हैं बंदे के हमें 500 रुपए दिए हैं। Very fruitful. Yeah, we were giving them a sense of the type of challenges India is facing. ये भविष्य का प्रधानमंत्री है। Economic challenges, other challenges, the general sort of attack on the democratic institutions. So that's what we discussed. सिर फोड़ने का मन करता है इसको देख करके। क्या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का सब क्या बंद कर दूं? इसको प्लेटफॉर्म देता क्यों है, ये भी तो एक बात है। अभी वो पैसे में खरीदते हैं ना ये लोग, यार दुनिया का तो पैसा चाहिए ना भाई। क्या मतलब है इसको यहाँ पे बकवास करवाने का? तो पैसे के लिए आदमी धोती भी खोल देगा। हाँ बिल्कुल, सब कुछ खोल देगा। इंडिया का इसलिए बर्बाद हुआ इंडिया। नहीं, अच्छा ये ऑडियंस देखो, इनमें से व्हाइट्स कितने हैं और इंडियंस कितने हैं। अभी कोई सवाल पूछ रहा है, वो सवाल भी स्क्रिप्टेड होगा लगता है। एक आध व्हाइट्स हैं, बाकी इंडियंस ही लग रहे हैं सब। मुझको तो व्हाइट को नजर आ नहीं रहा। ये है ना, ये व्हाइट लगता है। पाकिस्तानी होंगे और क्या, साउथ इंडियन होंगे।
सर ये इकोनॉमिक्स में फेल इस बच्चे को, सॉरी बच्चा नहीं कहना think, चाहिए, मतलब इस बेवकूफ को, I think the G20 is an मतलब important क्या conversation. लोग सुनते क्यों हो ऐसे, सुनते क्यों हैं गैदरिंग? It's a good thing that India is hosting it. Of course, there are issues in India that we raise, but I don't think I think the framing that are they giving them a free pass is not exactly correct. But do you think that obviously there's a war going on in Europe right now, and there's been this constant, I wouldn't say an allegation, but there is the fact that India has close relations with Russia, and we've had European leaders talking to India about it. And do you feel in this aspect of trying to lure India away from Russia, they won't bring up the persecution of minorities and Muslims in India, leaders from the West? No, I mean, India, of course, has a relationship with Russia. India has a relationship with the United States. India is a large country, and by nature of being a large country, it will have relationships with many other countries. So that's a normal thing. That's not, India has every right to have a relationship with whoever it wants. There is, of course, there are serious issues about the type of actions that are being taken with regards to institutions, with regards to democracy and stuff. And yeah, we would hope that there is a sense that there are underlying issues. Can I ask a Yeah. follow-up? No, please just. Yes, sir. Dmytro National News Agency of Ukraine. We know that the Modi government takes quite cautious position on the conflict and the war. Only issues that he has become an Russia issue. held against Ukraine. So that I'm curious, what is the opposition point of view on the issue? And the related question, is that cautious position of the Indian government related to the sharp increasing of the oil supply of Russian oil to India? I think the opposition, by and large, would agree with India's position, current position on the conflict. We have a relationship with Russia, and I don't think the opposition would have a different view than what the government is currently proposing. Hello, I am from actually Kashmir. I would like to ask a question related to Kashmir issue. And what would be your policy if you came into the power next elections, hopefully? And recently, 4 years before, the Article 370 was abrogated, and even opposition leaders were restricted to visit and meet the people. And how you see the future of Kashmir? Thank you. I mean, our position on Article 370 is very clear. It's in a resolution passed in the CWC of the Congress Party. I would urge you to take a look at that. Of course, we are for ensuring that every single person in our country has a voice, is allowed to express themselves, and we feel very strongly that Kashmir should develop, Kashmir should progress, and there should be peace in Kashmir. क्या वाह, बड़ा डिप्लोमेटिक. अरे क्या 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 बकवास कर रही है वो, पूछ कुछ और है, अजीब तमाशा. दैट मींस ही इज टेकिंग a stand of Modi only. क्या हाँ, वही तो कह रहा था नहीं, ना. पहले वो बोल रहे रेजोल्यूशन देखिए CWC में जो पास हुआ है उसको पढ़ लीजिए, तो दैट इज एंटी मोदी. और इधर बोल रहा है कि ठीक है डेवलप हो कश्मीर, तो बीच का है ना, बीच का है, मीठा है, मीठा. नहीं ये राहु है. केतु कौन है सर? ये तो राहु है. साथ में बैठा ना केतु, उसके तो मिडल में बैठा है ना वो काले कपड़े में, स्टैंड पे ट्रोडा बैठा ना, केतु है वो. Pilot for Dev. I just would like to know what are your next priorities, political priorities, and what will be your world vision in a context of growing tensions. Thank you.
What would be my your view on international relations in a difficult context that we are now? I've been saying in all my meetings that it is pretty clear that China is proposing a particular view, a particular vision of the planet, right? And they are putting on the table the idea of the Belt and Road. And one of the reasons they are able to do that is because they have become a center of global production. And this is something I told the people yesterday in the External Affairs office. But I don't see an alternative vision coming from our side. That vision requires a vision for production in a democratic environment. What the Chinese have basically shown is that it is possible to produce effectively in a coercive environment where you don't give people freedom, where you restrict their freedom, but you offer them prosperity without political freedom. And the challenge for us is, can we provide an alternative vision where we do production under democratic conditions with political and economic freedom? And I think there's a lot of cooperation that can happen between the United States, between Europe, and between us. And I think that's where a lot of our focus should go. How can we create an alternative to the Chinese production model that is a coercive production model? A competitive vision. आज इसको वीट नहीं मिला पीने के लिए लगता है. क्या बोल रहा है? Does it make any sense? अभी ये बोला है. He's not usual Gandhi. दादा तो चाइनीज जूते मारेंगे इसको. बहुत इसको स्क्रिप्ट गलत पढ़ा दिए लगता है किसी और ने. कुछ लोचा है दादा कुछ. Belt and Road initiative has gone to the dogs. अरे Italy is opting out of this BRI. और कुछ बोलना है? बंद करो. 2 घंटे हो गए. 2 घंटा 7 मिनट हो गए. दादा ये इसकी स्क्रिप्ट लिखता कौन है? सैम पेट्रोटा बैठा ना साथ में. जावेद अख्तर. नहीं, इसके चमचे हैं सब. दादा अगर जावेद अख्तर सुरजेवाला है, करण थापर है, ऐसे लोग लिखते हैं. कपिल सिब्बल है. नहीं दादा वो लिखता है वो यार वो जो लोगों के पता नहीं लगने देता, हाथ पे से लोगों की औरतों को उठा के ले जाता है. वो लुच्चा है, क्या नाम है उसका? थरूर. शशि थरूर. तो वो कहते हैं जैसे 11,000 की तार की होती है ना बिजली सी, ऐसे दूर से औरत को खींच लेता है वो. प्रेम चोपड़ा है थरूर. हाँ थरूर. तो साला बोलता बहुत है. सुना है आपने कभी उसको? जी. तो ये वो लिखता है. इसके स्क्रिप्ट मेरे समझ में एक बात नहीं आई कि दे वांट टू ऑफर देम प्रॉस्पेरिटी विदाउट फ्रीडम. इसका क्या मतलब है विदाउट फ्रीडम? वो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इट मेक्स नो सेंस एब्सोल्युटली. दादा वही तो कम्युनिज्म है, और है क्या फिर? अच्छा ये सारा पता नहीं 9 महीने दादा एक तो हमारी सर ये राहुल गांधी जब देश के बाहर जाता है वो मतलब होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ. अरे वो राजा इंसान है, वो कुछ नहीं रिपोर्ट करता. लेकिन इसका प्लेटफॉर्म कैसे मिलता है? कौन देता है इसका प्लेटफॉर्म? कबाल. कौन? इंटरनेशनल कबाल. अब वो है कौन? मैं ये कबाल में कौन कौन है? वही भी हो सकता है. जॉर्ज सोरोस नेटवर्क, वो है इंटरनेशनल कबाल. वो हर जगह पूरी जगह पूरा फाइनेंस करता रहता है. इसको तो हर जगह वही फंडिंग करता है. ये पक्की बात. देखो इसने अभी इसने कश्मीर पे बात की है
तो आपने सुना उसको कश्मीर पे उसने क्या कहा है? जी जी, मतलब कोई उसका था ही नहीं कुछ उसका आप कोई निष्कर्ष कुछ निकाल नहीं पाओगे। मतलब एक तो बोल रहा है CW कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रिपोर्ट आप देख लो, उसमें मैं क्लियर हम लोग बता दिए। फिर बोल रहा है कि नहीं डेवलपमेंट चाहिए कश्मीर में। सवाल कुछ इसको हमारे पंजाबी में कहते हैं खुत्ती जमूतता। खुत्ती जी पता क्या होती है? जब बच्चे गोलियां खेलते हैं ना बचपन में, उसमें एक वो गोलियां डालते हैं जमीन में खोद के, तो एक बिगड़ा हुआ बच्चा होता है कि या तो मुझे खिलाओ नहीं तो मैं इसमें पेशाब करूंगा। तो ये वो बिगड़ा हुआ है। दादा आप देखो, आजादी 2 लोगों ने सिर्फ दिलवाई, एक नेहरू ने लौंडियाबाजी करते करते दिलवा दी, और एक वो चरखा सूद ने नंगा सो के रात में बेडरूमों में दिलाई है आजादी। एक ने लौंडेबाजी करते करते दिलवाई और एक लौंडेबाजी करते हुए, और एक जो है दूसरा चरखा सूद जो था वो नंगा सो के जो है लड़कियों के साथ आजादी बेडरूम में ही दिलवा देता था, और बकरी के साथ में भी। वही तो। हाँ, एक ने बकरीबाजी करके दिलवाई और एक ने लौंडियाबाजी करके दिलवाई, ऐसे बोल। ना एक तो लौंडियाबाजी करता था, दूसरा वो नंगा सोता था, निर्वस्त्र महाराज चरखा सूद। तेजवीर बोला ना बकरीबाजी भी तो करता था वो। हाँ, 2 थन वाली पसंद थी ना उसको, 2 थन वाली। अच्छा दादा, एक बात समझ में नहीं मुझे आई। बोलिए। ये जो क्रंचेस होती हैं, जब आदमी की टांग बाजू कोई मतलब डिसेबल हो जाता है, उसके जो हॉस्पिटल में फ्री दे देते हैं ना यहाँ इंडिया में, बैसाखी जिसको बोलते हैं, बैसाखी। जी। लेकिन ये साला जवान लड़कियों के कंधों पे हाथ रख के चलता था, ये क्या फंडा है? गवर्नमेंट ने बैसाखी दे रखी थी उसे। नहीं, लड़कियां एक्सपेरिमेंटिंग विद द ट्रुथ। उसके जो असलाह है उसका वो एक्सपेरिमेंट करता रहता था ना कि हाँ भाई ये बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए बैसाखी चाहिए थी उसको। कैसे नेताओं तो एक बात तो मानना पड़ेगा, ये जो MK गांधी बंदा था और ये नेहरू वाला बंदा था, इन लोगों का मार्केटिंग बहुत अच्छा है। तो वो तो चमचे किसके थे? सुभाष चंद्र बोस देश के लिए मर गए, फिर भी उसका नाम सामने नहीं आता, और ये लोग भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर कहलाते हैं, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। सॉरी, चमचे किसके थे? अंग्रेजों के चमचे थे ये लोग। कौन सा इन्होंने आजादी ली थी? वही जवाहरलाल नेहरू ने तो वही माउंटबेटन से ही शपथ ली थी ना प्रधानमंत्री की। दादा वो कहते हैं ना कि यहाँ तक आने के लिए पता नहीं इन्होंने अंग्रेजों को क्या क्या परोसा होगा। खाली मैं एक काम करता हूँ, बंद करता हूँ इस स्ट्रीम को, फिर थोड़ी देर बात करते हैं अलग से, ठीक है? प्रदीप वो कर दो यार, थोड़ा सा अपील कर दो, इस चैनल को देख ले क्या करना। बिल्कुल। तो आज का जो महाराणा प्रताप जी पे हमारा एपिसोड था, वो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कृपया इस कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा कमेंट ज़रूर करें। और इसी के साथ ही हम अभी जो है समापन करते हैं इसका, और अगले अध्याय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे आपके सम्मुख। तब तक के लिए जय हिंद। प्रताप का हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में बोलेंगे। हल्दी घाटी के ऊपर हल्दी घाटी लड़ाई और दीवर का लड़ाई, जहाँ पे उसने मुगलों को हराया था, वो लास्ट है। वो पहले हल्दी घाटी जाने देना। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो अगला एपिसोड भी महाराणा प्रताप पे होगा, उनके युद्ध के ऊपर है, हल्दी घाटी और एक और है, उस पर होगा। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम, भारत माता की जय, जय श्री राम। हर हर महादेव। जय